showcasing the issues and problems faced by people with disability and sensitizing the society about them. Actually, our our theme is celebrating diversity and inclusion. To explain it very simply, diversity माने हला ए जो हमें एठी बसिचु on the stage 4-5 जन 5 or 6 people are sitting on the chairs and one is sitting on a wheelchair. 4-5 जन से stair दिगरी ऊपर को आसिले मु wheelchair और ramp दिगरी ऊपर को आसिली. So this is diversity. And मते जो स्टेज पर जगह दिया है जो रेस्पेक्ट दिया है जो पोजीशन दिया है, it is about the society, it is about the normal people. Inclusion is an appeal to them. तांको उटे अनुरोध कि सेमाने हमको तांका लाइफ रे इंक्लूड करंतु एकोमोडेट करंतु. अब किसी दिन तले हमारे जो हमारा ध्वनि रा हमारे जो होता है जूरी स्क्रीनिंग सेत्रे मो देखिए हमारे फिल्म मेकर माने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म आनचंती. हाँ on the issues of disability and inclusion हम आशा करूँ जे आमर एठी जो ऑडियंस अछंती प्लस परे फिल्म मन को जो बाहर ओटीटी प्लेटफॉर्म रे टेलीविजन में देखिबे से माने देखि कि दे विल बी इंस्पायर्ड टू include and accommodate more people with disability in their life. Thank you. I'd like to now welcome Chairperson Flo Ficci Bhubaneswar and G20 representative Ms. Namrita Chahal to share her views. Good morning. I would like to start with a quote by Robert Hensel. Know me for my abilities, not for my disabilities. That is what we are here for today. A very warm welcome to all the eminent personalities on the dais, off the dais. Shri, Pradeep, Jena sir, Chief Secretary, thank you so much for giving us your time. Dr. Lenin, Mohanty, Srimati Dolly, Jena, Shri Ananta Mohapatra, Srimati Lalita, Missal, Shri Jitendra, Biswal. Thank you all so much for being here today. I am Namrita Chahal, Chairperson, Flo Bhubaneswar. Flo is the women's wing of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. It is a 39-year-old organization with more than 8,000 members, headquarters in New Delhi and 19 chapters pan-India. Flo encourages and promotes entrepreneurship and professional excellence in women across all sectors of economic activities. Flo Bhubaneswar was the 17th chapter which was launched amidst the pandemic in April 2020, and we have now more than 110 members. Our vision this year is grow. We aim to help women to come together as a unit so they grow and develop in all spheres of life, financially, socially, physically, mentally. We work on skilling, upskilling, reskilling. We work on creating opportunities and providing them with the information of the existing government opportunities for all the women across Odisha. We also work with holistic development and welfare. We believe when we empower a woman, we are empowering an entire society. And this year, we have impacted the life of more than 10,000 women under our various verticals. On the 9th edition of Dhwani, we are very happy that this year it is Flo Dhwani, as Aaina has collaborated with Flo Bhubaneswar. And as Jitendra ji just mentioned, the festival is on celebrated diversity and inclusion. As he also said, that this special film festival
The chairperson needs to be a special person. I completely agree, because he is an immensely special person with wit and a zest for life. An amazing person who I have met thanks to Dhwani. Diversity and inclusion. It is important that we create the same opportunities for each and every person to participate in every aspect of life. Diversity and inclusion are moving beyond social responsibility. Companies also now recognize the benefits of inclusion, and we are very happy that this year, this time we have had many companies supporting us in this festival as well. It is our duty to work towards an inclusive India. The greatest disability is the lack of ability for us to appreciate each other for our strengths. Every individual is empowered, and it is our responsibility to respect and celebrate the differences and the uniqueness in each other. We are very, very proud to be hosting this session under G20 Empower 20 Vision. And we thank National Flow and the National President, Jayantidalmia, for giving us the opportunity to be associated with G20 and Empower 20. The Group of 20 is the premium forum for international economic cooperation. It plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance on all major international economic issues. Empower 20 is the G20 alliance for the empowerment and progression of women economic representation. Hence, G20 Empower. The primary objective of Empower 20 is to ensure gender considerations are mainstreamed into G20 discussions, and these are included in our equality and economic empowerment. I think I have spoken enough. I will come back and say a huge thank you to Aaina for collaborating with Flow for the Flow Dhwani Festival. Jai Jagannath. Thank you so much, Namrita ma'am. Now I'd like to invite our next guest. As Lalita ma'am said, a man admired by many for his incredible support to social causes. He has been the go-to person for every position that he has held throughout his tenure in various departments like energy, water resources, rural development and information technology. Sir, our sincere wishes on your new position, and we are absolutely honored to have you among us. Ladies and gentlemen, the Chief Secretary and I, Shri Pradeep Jena. Thank you for introducing me. I don't know if I deserve that much of words. Thank you, Aaina, for giving me this opportunity to stand before all of you and to share a few of my thoughts on the occasion. Thank you, Jitendra, for your initial words that reverberates in every corner of the state and the world. Thank you, Ficci Flow, for supporting and standing by Aaina to spread the message of ability, special abilities with the so-called differently abled people. Possibly we don't have the capacity to understand, appreciate and admire the special abilities these sections of the society have. And I am very happy to see such an eminent panelist, Dr. Ananta Mohapatra, Madam Dolly, Jena, and my younger brother Lenin, and of course Lalita ji and Sneha. These are the people who can guide the society in appreciating the challenges being faced by the differently abled people who have lot more capacity that the society has not so far understood. The moment we talk of inclusive development or inclusion of the issues of the differently abled, I only pity all of us that we have not yet understood the subject and we don't do something which we ought to do and we have not done.
But the challenges are immense. Possibly those of us who are in government and those of us who are outside the government but in the society, there is a lot for us to sensitize ourselves, and this particular 2 days festival, the 9th edition of Dhwani, is a thing in the right direction. And if this film festival can influence, motivate and create awareness in people like us, possibly the world would be a different place in future. So therefore the challenge for Dhwani is not to confine itself in this room for the next 2 days. How do we take these films outside this conference hall to the districts and sub-district level? And here I would only suggest that I will do my bit, let us partner with SSCPD department and take it to the district and the blocks where people should watch these films, understand and appreciate the subject, and they do a bit on their part. It is always blaming the government doesn't help. Working with the government, and in what is government? Government is some people like me and you who are doing something good and do not do something else good, or maybe they do something else not so good. So whatever they do, it's because of their whatever limited knowledge they have, or it is because of the particular attitude and mindset they nurture. So how do we influence them to change their mindset, change their understanding and change their attitude to this subject? Possibly can be achieved when people see films. Films is a very powerful media. Nobody has the patience to read few hundred pages, but by seeing a film of 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 1 hour, you can enrich yourself a lot more than what you would have done through reading the books. Since challenges are immense, we need more partners, and Aaina is a good organization who is doing a tremendous amount of work, but I would request Lalita and Sneha and all the volunteers and partners of Aaina to grow the size of the partnership base. Let us make it a platform. Instead of being one agency or 2 agencies or 5 agencies, can we get hundreds of agencies and hundreds of institutions joining hands to take the message to the world everywhere? So that will be my suggestion, and I can only say that I will certainly not let you down from my side. I will be part of it. And I will try to do whatever I can in my present capacity or otherwise as a person in influencing policies, programs and schemes and sometimes the guidelines. And here we have seen how difficult it is to access this conference hall. And the same is the problem in many offices, in many places. How do we influence, motivate those agencies to at least provide access so that somebody can come and share about him or her? So this is a big challenge in government. Some initial actions have been taken, but then a lot of things need to be done. That is what we will do. And next is, how do we detect physical challenges in these people early in their life so that we can do something to reverse few of those things or to minimize the damages. And those who cannot, and they are special children, as a special child, as a special person, he cannot be called the child of that home or that family. He has to be the child of the society, and the society, which includes government, have a special responsibility towards these people. And that is where all of us need to work with governments, with other institutions to make them understand that it is not limited to the parents and it cannot be just left to the parents. All of us have to join the parent to do something so that the person, his or her special abilities come out and he or she becomes a mainstreamed person contributing to the growth and development of the society.
I'm sorry, I have to leave early because I have a meeting at 11. I have taken 10 minutes time extra to reach the meeting place. So with these words, let me once again thank all of you, and I will not go there. I'll straight leave the dais because it's I have to reach by 11:15 at least. Thank you. I know you're pressed for time, so I'd like to request our volunteer teams to hand over a memento to Shri Anand sir and Namrita Chahal, who could felicitate sir before he leaves. Before he goes, I don't need a mic. You all must say that what he has promised, you shall get it out of him. Thank you. And I assure you of that. Thank you. We are very sure he's going. Thank you so much, sir, for your time. Yes. I'd like to now request our technical team to play a short video for us. Is there no sound? We seem to be running with some technical issues. I think I'd like to invite the next guest while our technical team works through those issues. I'd like to welcome our next guest, an Indian National Film Award winning film director and producer, alumna and governing council 92 to 95 at the Film Television Institute of India, an actor par excellence with many iconic characters such as Razia Sultan, Miss Bijaya Jena, better known as Miss Dolly Jena. Ma'am, I'd like you to please share your remarks. Namaskar. Good evening. Yeah, it's really indeed a proud moment for me to be here associated with this edition of this Dhwani Film Festival, which deals with special, people, disabled people, and I must say that art has been a creative space for minorities. In literature, we have written about people with disabilities. In paintings, we have, but films also is another form of art form, a new art form which is 100 years old. We have been slowly having films talking about people with disability. The first time I saw a most brilliant film in 2007, it was a French film called The Diving Bell and the Butterfly. It was about a man who a really brilliant editor of a magazine called Elle. He gets a heart attack. He's totally paralyzed. Only his one left eye was moving. So how he told his story with the blink of his one eye to a person, and who wrote his journey, his life story,
and published in a novel, and they made a film. That was actually heart-wrenching, and it was so wonderful for me to see that a man who is paralyzed and with one eye moving can tell his story. So we have achieved the technology, so now we can do many things. Earlier, if such a person happened, then he would be abandoned by the family and you would not hear his story. So now, then the next film I saw was on Stephen Hawking. His film, the Theory of Everything, for which Eddie Redmayne was nominated. It got many Oscar nominations, and that his life was the most. And other women come out and make films. ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଲବି କରିକିରି अपील କରିକିରି फिल्म सब्सिडी को रिवाइव କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ मनमोहन महापात्र आमे मिसिकिरी आमे सब लेखिकिरी ताकू ये कलु जदि तमरो सब्सिडी न मिलिबो यू कैन नॉट मेक ए फीचर फिल्म। सो इवन women should be given chances. I have stories about, so many stories about women who are abandoned by families, like, and real stories. Somebody is abandoned in Bihar, somebody is abandoned in West Bengal. And why not make such short films? Ajikali OTT re semane they are not interested in song and drama, song and fight scenes. They are interested in good stories. Why not tell such stories? ए धरन आमे जदि स्टोरी छोटो माने 20 मिनिट 30 मिनिट गोटे एपिसोड पाई करिबा करिकिरी आमे ताकू देखैबा ताहाले तो people will be sensitive. गोटे डिसेबल झियो तार कोन डिजायर्स एंड ड्रीम्स सेटा भी आमे तार सेक्सुअल डिजायर्स एंड अवेकनिंग ए धरण आमे जदि गोटे फिल्म करि पारिबा अबाउट वुमेन विथ डिसेबिलिटी एंड विथ support from Aaina or government or anything, I would really like to do it and make people aware of this kind of sensitivity towards such special people, and make them more we would be compassionate towards them. And I don't believe in charity, you have to empower them. And I'm very happy to tell you that mo airport re asila bele Bombay re jo mor प्रिंट कले बोर्डिंग पास ये से माने डिफेंडम थिले ता छड़ा मु जतले मॉल रे जाउची बॉम्बे रे बहुत गुडाए लोक अछंती स्टाफ जो माने कि दे आर एम्प्लॉयड से माने पीपल विथ डिसेबिलिटी. So the society is changing, we are accepting and we are empowering them, and I hope this continues and it grows more and more, and I would really hope to see a day where we all would be inclusive and understand each other very well. Thank you. Namaskar. Jai Jagannath. Thank you, ma'am, for coming back for the second time, and most importantly talking to our audience members in Odia. से जहाँ जहाँ कही जाइथिले इंग्लिश रे पूर्ण थरे ओडिया रे कहले ताले आम मान को बुझिबा पे सुविधा हबो. So thank you, ma'am, again, once again, for your speech and remarks. Before we go on to our next guest, I'd like to welcome another guest who's in our midst right now, Shri Arun Bothra sir. So if you can come onto the stage. Arun Bothra sir, our previous edition रे हमको बहुत support करे थिले, and we'd like a round of applause from the audience and welcome sir to the dais as well. Thank you. Technical team, are we ready to? Okay. So now I'd like to hand over the mic to the next guest. He's a multi-talented person and he's on many hats. He has a background in law, he's a spokesperson, a former editor. He's a man with a magnanimous voice for me, who's always seen and heard taking up social issues, and he talks about them. His association with Aaina goes way back, and Dhwani also goes way back, and that's why we are over the moon that now that he's taken up the position at the Odisha Tourism Development Corporation as its chairperson. So request to Mr. Lenin Mohanty to share his remarks. Namaskar. Aaina जो व्यापक परिवार से परिवार मु भी गोटे सदस्य आपण माने जेमती समस्ते जने जने सदस्य मु बेले बेले निजुको प्रिविलेज फील करे जे आईनार जो परिवर्तित
परिवार से परिवार मु सुजोग पाइछि गोटे सदस्य हवा पाई गोटे बड़ करताली आईना पाई। बंधुगण या पूर्वर थिले ए राज्यर मुख्य शासन सचिव बा चीफ सेक्रेटरी श्री पी.के. जेना जी जड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर जड़े ऑफिसर जहाँकर नियारा क्वालिटी अच्छी जड़े ऑफिसर जे तांको ढांचारे अनेक ट्रांसफॉर्मेशन ओडिशा रे आनिबा पाई सक्षम हेइथिले। किछि समय पूर्वरु से आमुकु एठू छाड़ी गोटे आहुरी इंपोर्टेंट मीटिंग को जाई पहुंचीचंती किंतु जीवन रो जो गतिविधि केबे कोनोसी चेयर खाली रुहे ना। आईना सेटा आजी ध्वनि प्रोग्राम रे आउ थरे प्रमाण करिचंती कहीं गले मान्यवर मुख्य शासन सचिव आसिले ओडिशार जड़े डेकोरेटेड ऑफिसर जड़े ऑफिसर जहाँको काम नियारा जहाँकर विभिन्न समय रे जो डिकोड करंती स्तब्ध करी दिए समग्र राज्य को आम गहन रे अछंती आमर अति प्रिय पुलिस ऑफिसर बेली कहिकरी मु सीमित रखिबी अरुण बोत्रा सर गोटे बड़ करताली अरुण सर को पाए। आम गहन रे अछंती आजी जे चेयरपर्सन जे ए जो ध्वनि फिल्म फेस्टिवल अच्छी तार सी होचंती चेयरपर्सन। अनेक लोक अनेक कथा कहिकरी जाइचंती किंतु मु जहा तांकु जाने जड़े व्यक्तित्व आमे तो इनक्लूजन रो कथा हो बेले बेले मते लागे जे सी जेमती चिंता करंती मु तांक भितर इनक्लूड हो जाए आ मोर सेटा होची सबुठु बड़ सौभाग्य जे मु तांक पाखरे सानिध्य लाभ करिबा पाई किछि स्पेस पाइची। जितेंद्र भाई को पाई गोटे बड़ करताली ना ए ताली हो नहीं गोटे बड़ करताली कहीं की करताली सी आज मते भी शिखेले जे आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जोठी आमर दायित्व होची जे आमे किछि फिल्म माध्यम रे लोकंक पाखकु किछि मेसेज नहीं करी पहुंचेबा जहां माध्यम रे जो इच्छा करूचे जो अभलिषित दिगटी आमे चिंता करूचे the way we are all yearning for the way we think about inclusiveness से मेसेज टी लोकंक पाखरे पहुंचीबो केमिति पहुंचीबो ना ध्वनि माध्यम रे पहुंचीबो। थैंक यू जितेंद्र सर फॉर क्लियरिंग अस ऑल रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ दिस इलस्ट्रियस फिल्म फेस्टिवल। आम गहन रे भी अछंती मोर बड़ भौणी जहाँको ठारू अनेक जिनस मु शिखिछि अनेक जिनस आहुरी शिखिबी केवल जे डिसेबिलिटी की डिफरेंटली एबल्ड कथा नुहे अनेक क्षेत्र रे से काम करिसंती जेबे मु जानी थिली से शिशु अधिकार उपरे काम करुतिले आ शिशु अधिकार ठारू आरंभ करिकिरी ध्वनि फिल्म फेस्टिवल प्रत्येक जिनस रे तांकर निखुणता अछि। मोर बड़ भौणी ललिता मैडम पाई गोटे बड़ करताली आ जेतबेले ललिता मैडम को पाई करताली दिया जीवो मु निश्चित भावे मने पकेइबी कहीं की ना फॉर मी द लेडी who has a different taste, the lady who does all the thing in her own imitable style, the lady who kinds of leads the way. We yearn a lady to lead us. A huge round of applause. गोटे बड़ करताली मोर अपा स्नेह अपांक पाई। आम गहन रे अछंती ओडिशार सुनाम धन्य मु काहे की कहूची आमे आज सौभाग्यवान जे आम गहन रे अछ। I have been watching her since I was a child. I have been watching her more because जेतबेले दिल्ली रो कि बॉम्बे रो गोटे बड़ स्क्रीन तुमे देखिबो यर्न थिबो जे हमरो एठी ओडिया जणे किए अछि सेतबेले द ओनली ओडिया मैम who was always there जानकु आमे देखिले खुशी होतले डॉली जेना मैम गोटे बड़ करताली डॉली मैम को पाए। नम्रता मैम विषय सुनी थिले महिला कमिशन रो सदस्य थिले किंतु आजी मोर सौभाग्य जे G20 को जे दिग दउचंती जे फ्लो करूचंती जे तांकर अभिवाद कैंपेन ललिता अपा भी थिले अन्य व्यक्ति विशेष थिले आमे सारा ओडिशा बुलिलु जेतबेले बुलु हमको अनेक लोक टाही टोपरा मध्य करंती जे कोन हबो कोन कंक्रीट चेंज आसीबो आपण जानी खुशी हेबे बाय द टाइम द कैंपेन स्लोड डाउन बाय द टाइम कैंपेन रो सेकंड फेज आरंभ हैला
आमे तो आश्चर्य हेलु जो माइंडसेट चेंज आसतिला आमे तो आश्चर्य हेलु जो चेंज विभिन्न जगार आमे देखिलु व्यक्ति विशेष को मनरे बड़ चेंज को अपेक्षा करी छोट छोट चेंज को जदि आमे रिकॉग्नाइज करिबा नाही कि चिन्हिबा नाही आगु को जीवा व्यक्ति विशेष हिसाब रे कि समाज हिसाब रे भारी कष्ट आसंतु आज जो हॉल अच्छी ए हॉल फील्ड अच्छी जो माने आमे चिंता करूचे इनक्लूसिवनेस रो कथा जो माने आमे चिंता करूचे डाइवर्सिटी भितारे केमिति आमे समस्त को समान परिमाण रो सम्मान दबा मु तो विश्वास करे ए हॉल रे एते एनलाइटेंड लोक अछंती मानसिक दिग गोटे प्रकार किंतु ध्वनि माध्यम रे चेष्टा करिबा जेमती माननीय चीफ सेक्रेटरी सर कहले जे जो मेसेज टी ए हॉल भितरे आबद्ध हबा तो दरकार कहीं ए मेसेज आग आमे देखिबा किंतु चेष्टा रहू जे ए मेसेज को केमती आहुरी व्यापक करिबा आहुरी पहुंचेबा सेति पाई ए ध्वनि पाई लागिथिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेष आईनार समस्त टीम मेंबर को पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद गोटे बड़ करताली आईनार प्रत्येक मेंबर पाई आउ गोटे थरे विशेष अनुरोध पुणी थरे गोटे बड़ करताली आम समस्त पाई धन्यवाद वंदे उत्कल जननी नमस्कार। Thank you so much, Lenin sir. I was not wrong with the magnanimous voice. So आपन को कथा रूप होप को चे ध्वनि रो प्रतिध्वनि आवरी बढ़ी चालू. Next technical team are we ready? So technical team को मु request करी भी से गोटे सिनेमा छोटो सिनेमा हमको देखेबे. सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है हारी बाजी को जीतना जिसे आता है निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर और हमसे बच के रहना मेरी जान हारी बाजी को जीतना हमें आता है। Thank you so much. We have one more film that we'd like to show right now. Can we request the light team to dim the lights on the stage, please?
भिन्नक्षमଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା କିଛି ନଥାଏ, ବାସ୍ କିଛିଟା ଅକ୍ଷରର ଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ସଂଯୋଗ। Thank you, technical team. Last but not the least, would like to welcome the man with the most experience amongst all. He's a stalwart, he's a legend, he's a thespian. I could go on and on about him, but most importantly, he's a lover of the arts and film. And he has been a well-wisher and friend to initiatives like Flow Dhwani empowered by G20. Without much ado, I'd like to request Dr. Ananta Mohapatra to bless us and share his remarks with the audience. I would like to come to the front so that all of you can see him rather than me. And particularly Lenin babunko kahiba pore au kahar kichi kahibar achi boli mu bhabuni. Acha Odia re kahibi na, English re kahibi na, Hindi re kahibi na, Bangla re kahibi. Odia hato teko. Okay. करे कूल कौ कूल तबे जन्म हब ता तबे जान कर्म कौ कर्म कर तबे निजे निज हृदय रे विश्वास करी आगे जा जदि सठिक कर्म निष्ठार सहित ताहले कृतित्व निश्चय मिलिबो जेमती डॉली जेना को मिली आज ये जो सुजोग पाइच तार कारण भी सही है दुनिया रे केवल दी प्रकार अच्छी अंधार आलुओ सत मिछ किए पारिबो किए न पारिबो पारिबार शक्ति समस्तंकर अच्छी भगवान आपण मानकु से शक्ति दियंतु। Thank you, sir. And we are very lucky to have you amongst us. Your unwavering support has been a motivation for us to keep going. Now I'd like to welcome Ms. Sneha Mishra, Secretary from Aaina, to give the vote of thanks. Thank you, Shilpi. Good morning, all of you. First of all, my apology for all these unprecedented problem that has happened, which is beyond our control. बोधे जो गत 2 दिन धरी वर्षा आई से इलेक्ट्रिसिटी माने irregular for which there was inconvenience, so I apologize for that. Thank you all so much, all the dignitaries who are there on the dais, even though the chief guest of this morning, the chief secretary, is not there. But I take this opportunity to thank him also from his busy schedule, because the assembly is also going on, so he has to find out at least 15 minutes time, and that shows his commitment to the cause. So in his absence, I also propose a vote of thanks for him on behalf of Aaina, Flow, Ficci, and all the organizers. Thank you, sir. And I also would like to thank our Rashmi Verisi for the beautiful Odissi performance he has given just before the program starts. Yes, Rashmi, thank you so much. Thank you so much for your performance. And what a wonderful way to start this day. Today is World Down Syndrome Day, and we have seen children performing, and then still we are thinking that they are persons with disability. How many of us can do the Odissi dance? I know many of us probably have been taught and then performed sometime, some or other time, but we are not that confident. So thank you, Rashmi. You are lovely. So, and I also take this opportunity to apologize on behalf of Arun Bothra sir. He actually had to leave because he had to present in the budget session. He find out 15 minutes time, so it is really nice of him that he came and join us. So he asked me to apologize on behalf of him. And I take this opportunity to thank Anant sir
who is a mentor, a guide, and a person who's always stands, like besides us, behind us, and also sometimes in front of us. So thank you so much, sir, for being here. I take this opportunity to thank officially Dr. Lenin Mohanty, the chairperson of OTDC, and of course my younger brother, for being here and also for bringing many things here onto the floor. Thank you so much, Lenin, and you have been there. I don't need to actually thank you. Thank you, Jitendra, and thank you, Lalita Appa. And I take this opportunity to also thank you, Madam Dolly Jena, whom we have actually been like look up to as in our childhood we have seen her films, and definitely we all are so fascinated that she is here, and I'm so happy that she is so generous to be here for coming 2 days. So thank you so much for being here. And I also would like to introduce another person, a guest of ours, Mr. Samir Ghosh. Amida, if you just could stand up. And he is a consultant to World Bank, he is a consultant to UNICEF, many, bigger organization, and of course, a very dear friend of all of us, and a consultant to Aaina, of course. And I said, Samida, we wanted to, we just want you to be here for these 2 days. It's long we have not been met, but this is also another occasion where he can be there. So thank you, Samida, for finding out time. I know he was conducting training for many different, many developed days, and then get to listen things from you. So thank you so much for being with us here. And I take this opportunity, my words are really falling short to thank Namrita, the flow of a Ficci partner for this particular, edition. And I wish this partnership will continue, Namrita, because this is just the beginning. And as the Chief Secretary said, we have to actually get in many more people into this platform. So let us make it, like that big. With all of your support, I think we should think about that. We should dream about that. So thank you so much for all the support that you have extended to Dhwani Festival. And of course, our chairperson of this festival, Jitendra, jete kahile bhi kam hobo Jitendra ko bisayre. I remember in 2015 or 16 when I get to know about Jitendra, and I kind of invited him to this festival, and then now he became the chairperson of this festival for the last 3-4 years. So you can see the kind of person he is, the kind of energy he has. I'll tell you that even I don't have that kind of energy. Sometimes I get irritated, but he is very cool, and he, very coolly he, manages things. So I think he's a befitting chairperson of this particular festival. So Jitendra, with your guidance, I think the Dhwani festival, it goes a long way. It will definitely go a long way. Thank you so much for whatever you are. And thank you so much, Lalita, for being here, our President Aaina, and always guiding us, always supporting us. And I think a very warm person, a very emotional person, but always there with all the initiatives. Even if she is not there sometimes physically, but her motivation and her guiding, words are always there with us. And all of you, the wonderful audience who are here, my children, thank you so much for being here. And thank you all the filmmakers who have been actually here, all the guests. And I look forward to the next session, which is going to be very, very exciting again. मुझे सपोर्ट मान के कहया पई चाहिए नेक्स्ट सेशन जोटा अछि सेथिरे आम पाखे जो फिल्म मेकर्स माने अछि से माने ए जो फेस्टिवल रो प्रथम एडिशन रो फिल्म देई आसीचंती एंड दे आर नाउ दे विल टॉक अबाउट देयर ओन जर्नी आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट एंड डेफिनेटली दैट सेशन इज गोइंग टू बी मॉडरेटेड बाय मिस्टर सुजयदेव आई थिंक ही इज हियर so आपण माने जे जानि थिबे फिल्म हिस्टोरियन सुजयदेव who is doing a lot of research on films and all, so he is going to moderate that session, so that will be also exciting. Thank you so much, and I look forward to both the days. And thank you, Shilpi, and thanks all my team members. Thank you. Thank you, ma'am. I'd like to request our EC member, Mr. Jayashankar Panda, and Ms. Somare ma'am to come up on the stage and felicitate our guests on the dais. And I request our team of volunteers to bring out the mementos that would be given to our panelists. Requesting Mr. Pradeep Kumar Rath, our member, EC of Aaina and founding member, to also come on stage and felicitate the guests.
So can we have our EC members and the guest dignitaries on the dais, and photographer, if you want to take a photo of everybody on the stage. So I am on the stage. Oh. I'd like to welcome on stage our EC member, Ms. Vishaka ma'am, to also join us on stage. Requesting EC member Shefali to also join us on the stage. Can we have a round of applause from the audience for all the esteemed guests and our members? Once again, a thank you to all our esteemed dignitaries on stage. We are very, very honored and privileged to have you in our midst. To the audience, we have a short break before we head into our next session. So there's tea provision on the outside. So if you want to head there. And like Sneha ma'am said, there's a very interesting session coming up. It's a tete-a-tete with a historian, a film historian, Mr. Surjadeo, and he's going to talk more about some of our filmmakers who've been part of Dhwani since the very first edition. So see you in the next session. Since our audience members काफी excited लाଗୁଛନ୍ତି ध्वनि ପାଇଁ, so हमें break तो देइछु, but break भितरे it seems nobody is interested in tea. तो हमें हमर गोटे next performance को जिबा. There's a group of very special friends. से तीन जण आछंती हमर आईना रो Spurs State Resource Center for Deaf and Blind and Therapeutic Service Center for Children and Intellectual Disabilities. So we have these trio of friends who will be taking us on a very special journey into their world. And let's welcome the three special students, Aditi, Sai Smita and Swayam Prabha. Technical team, are we ready with the songs? Okay, let's bring on our three friends, Aditi, Sai Smita and Swayam Prabha. Ready?
I'd like to request our team of volunteers to please bring back Aditi, Sai Smita and Swayam Prabha back onto the stage, and will request a chairperson of Flow Dhwani empowered by G20, Mr. Jitendra Biswal, and our EC member, Ms. Shefali, to please felicitate our three beautiful performers. Can we have a photo with them? If okay. Thank you so much, Shefali and Jitendra. We continue with our 5 minutes break, and then we'll continue on to our next session. So welcome back. Our audience members ପାଇଁ our next session ପାଇଁ ଯେହେତୁ time ଗଡି ଚାଲିଲାଣି ଆମେ our next session ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦବା.
प्रथम मु स्टेज ऊपर को डाकिबा को चाहिबी से होउछंती गोने फिल्म हिस्टोरियन क्रिटिक राइटर पोएट जेते तांकर कहिले कम पड़िबो एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर प्रेजेंस मिस्टर सूर्यदेव टू बी ऑन द डायस ई सेशन टा को एसोसिएटेड अछि सूर्य सर हमको सही गोटे छोटो जर्नी रे नै कि जिबे टू सम ऑफ आवर फिल्म मेकर्स सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सूर्य सर टू जॉइन अस ऑन स्टेज Okay. So welcome everybody once again to the next session, which is the tete-a-tete with a film historian and a great critic, Mr. Surjodev. Mo mic ta ine moro colleague, our director of programs, Mr. Dilip Biswal ko hand over karuchi. Se sir, aw amar baki filmmakers man ko welcome karibe. Dilip sir, the stage is all yours. Thank you, Shilpi. Since 2011, we have been collecting films on disability issues, where more than 3-4 filmmakers have given their films continuously for more than 7 years from the inception of this film festival, whose films will be screened in this session and will also get the opportunity to meet the respectable filmmakers here. But before we go to this session, let us meet Mr. Surjodev, a renowned film historian, befitting critic. He is recreating Odia cinema, a national award winner for his book Kali Pai Kaliro Cinema. He is the host of the panel. Please have a big round of applause for Shri Surjodev. I now invite Mr. Ambuja Satapathy, an eminent filmmaker and director who has given more than 4 documentary films on disability issues to this festival since 2011. And he has associated with Aaina Dhwani Film Festival since 2011 and helping a lot. The films are The Torch, Twinkle Twinkle, Dove's Tale, I Am the Circle in the Triangle. I now invite Mr. Santosh Panda, an eminent filmmaker and director, national awardee on social issues. He has given more than 10 films on disability issues to this festival since 2011. His films are Life with Diversity, The Vision, Bhool Re Bhool Karani, The Helping Hand, Dancing from Heart, The Dignity, The Attitude, Munna, Urbosi. So many historic films are made by Shri Santosh Pandaji. I would invite Mr. Snehashish Das, who is a visual chronicler, renowned filmmaker. He has worked on several documentaries stating the social development and environmental issues. By making meaningful films, he has been nominated to participate in various workshops of social development programs in national and international level. Apart from Odisha, the unity has based in Delhi as well. He has given more than 8 films on disability issues to this festival since its inception. The films are Let Me Tell You, We Can Work Together, A Silent Noise, Human Lane, I Am Sorry, Love is Blind, Let's Bicycle Together, Desire and Disability. Now I hand over the session to Surjodev sir. Sir, please come to the dais, sir. Sorry. So you can use the mic and sit there and have it as you please. Yeah, let me just sit here for a second. Okay. Namaskar, good afternoon. Actually, indeed, it's a privilege for me to be here and to curate this session. I'm a Odia Kotha, Otha English Kotha. So, Pakabaki say, I have a Kotha. So, the format goes like this. I'm a Prathame cinema tinta dekhiva, then we'll go to question and answer. Then again, we'll watch 3 movies, then we'll go to question and answer. And I think a process will come to the conclusion of why film on disability.
why film on disabled person. So let's start and let's watch the movie. हम ताप पूर्व कही रखे जे जो तीन जन अच्छी एठी they are very close to me. अंबुज का संगरे तो आगुरु काम करिछि. He as a director and me as a script writer. And स्नेहासुस को भी जानी ची बहुत भल भाव जानी ची तंकर कोकली जोगु एवं संतोष को भी जानी ची तंकर साबास बिजु जोगु. They are very close to me. So we'll go very non-formally. बहुत non-formal way हमें कथा हबो. And we'll start. First we'll watch the movie, then we'll go for the session. AP, please. आपको पता है कैपिटल हॉस्पिटल कहाँ पे है? लेफ्ट या राइट? शायद आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, बता सकते हैं कैपिटल हॉस्पिटल कहाँ पे है? देखिए, आप यहाँ से सीधे जाइए, 1 2 3 चौक के बाद और एक चौक आएगा, वहाँ से सीधे 200 मीटर चला जाएंगे दाहिने तरफ, उसके बाद फिर बाएं तरफ थोड़ा मुड़ जाएंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा कैपिटल हॉस्पिटल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ अनिल, हाँ तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ मैंने यहाँ पे एक आदमी से पूछ लिया है, बस पहुँच रहा हूँ। Mind the gap, the vision, and now a silent noise. Mind the Gap is being by Ambuj Satpathy, the vision is being by Santosh, I think. And a silent noise is by Shnasis. It is time that we should hear the noise and don't let it go silent. You have to feel the noise. शब्द को अनुभव करिवार कथा, शब्द को सुनिबा अपेक्षा शब्दर अनुभव ही बेसी शक्तिशाली। तबे कथा होची nowadays more and more films are being released with the main character of disability. More and more films are being produced with the motto to create awareness among the people about disability. You all three filmmakers
they are connected with Odia film industry since long, and they have been producing feature film, documentaries, and film on disability too. How difficult it is, and how do you differentiate the film producing or making for disability, and what is the difference between the mainstream film and the film on disability, and what are the difficulty you all faced during the making of the film on disability? Let's start from Ambuj. Hello. It is audible? Okay. So कथा होची जे जो वर्ड कहिले जे डिसेबिलिटी ए डिसेबिलिटी वर्डटा को केमती तैयारी है एक्चुअली गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट आमे माने गोटे कौन कहूँ डिसेबल बोली कारण आमे जदि कहवा जे गोटे चैलेंजेस आमे फिजिकली चैलेंज्ड मेंटली चैलेंज्ड ए जो वर्ड गुड़ाक कहीकि बर्तमान गोटे स्टेप को आगु को जाइचे जे सेटा गोटे डेरोगेटरी हम ना आमे क्या ब्लाइंड कहवाटा किंबा लेम कहवाटा किंतु कथा होची जे चैलेंजेसटा समस्त पाखे किसी ना किसी अच्छी तो से जो आमे जोटा डिफरेंशिएट करूँ गोटे नॉर्मल लोक एवं आ गोटे चैलेंज लोक तार डिफरेंस रो जो सोशल बैरियर गुड़ाक जोगु आमे कहूँ जे डिसेबिलिटी वर्डटा गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट तो माने आमे तैयारी करचु सेटाको तेणु से जो आमे सोसाइटी तैयारी करिछि सोसाइटी जो लार्जर सेक्शन रे आमे तांको अंडर वैल्यू करूचु तांकर स्पिरिट को तांको सपोर्ट देबारे तांको गोटे तांकर जीवन गोटे फुलफिलमेंट पाइबारे तांको एजुकेशन तांकर हेल्थ तांकर अन्य राइट्स को से माने केमती एनेबल हेबे जोथि पई इनक्लूसिव सोसाइटी कथा कुआ गला सेते बेले गोटे फिल्म मेकर रो भूमिकाटा बहुत इम्पोर्टेंट रही कारण से जो बैरियरटा को काटिबा पई हेले आमको से भली हिसाब रे स्टोरीटा डेभलप करने को पड़ो जहाद्वारा आम केवल आखिरे देखुनु आम आमको गोटे भल माइंड दरकार गोटे ब्यूटीफुल माइंड एंड ए ब्यूटीफुल हार्ट कैन रीड अंडरस्टैंड एंड शेयर एंड एज वेल एज कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस तेणु गोटे ब्यूटीफुल हार्ट रो आवश्यकता अच्छी ब्यूटीफुल माइंड रो आवश्यकता अच्छी ए जो प्रोसेस रे it is very important for a filmmaker to understand the communication strategy हमको strategy टा केमती करियो पड़िबो स्टोरी बिल्डिंग टा को केमती करियो पड़िबो जहा फल रे आमे गोटे कम्प्रिहेंशन रो क्लैरिटी आनिबा हमको प्रतिटी शब्द प्रतिटी एक्शन एवं प्रतिटी दृश्य को बहुत सीरियसली बहुत इनसाइटफुली आमको तैयारी करियो पड़िबो जहाद्वारा आमे गोटे लास्टिंग इम्प्रेशन दे परिबा दीटा सेक्शन जेते प्रकार चैलेंजेस थाउ कि न थाउ जो माने पॉलिसी मेकर अछंती जो माने केयर गिवर अछंती जो माने पेरेंट्स अछंती से माने गोटे कंटिन्यूड सपोर्ट देबे एवं तांकु बुझी पारि तांकर नीड बेस्ड कना समस्तंकर परफॉर्मिंग एबिलिटीटा डिफर करूची समस्तंकर आम समस्तंकर आमर परफॉर्मिंग एबिलिटी जेमती वैरी करूची आमर नीड्स मध्ये सेमती वैरी करूची से अनुसार हमको अब जहाँ बुझली जे कंटेंट को डेवलप कला बेल को बहुत बड़े दिग को देखा पड़े से प्रश्न होची जे कंटेंट को डेवलप कला बेले ताको गोटे सिनेमैटिक फॉर्म को आनिला बेले जति पेस अन्य जनर फिल्म दरकार हुए बा जति लिनियर फॉर्म बाटे अन्य फिल्म जनर हुए तो यही जनर रे फिल्म कला बेल को टेक्निकली कौन कौन सब डिफिकल्टी फेस करिया पड़े एंड हाउ यू आर डिफरेंट इन दैट how I am different because I saw a lot of your films and most of the films are being that is message oriented and that's created different impact that they are normal yes they can that's why I asked you that how you converted the content to the character yes they can or they are normal. That's why I asked you this question. Definitely ଯେତେବେଳେ actually start କଲି ମୁଁ କରିବା ମୋ ପାଇଁ definitely difficult ଥିଲା because technically ତ ପରେ ଆସିବ but mentally how to adapt ମାନେ
इफ मुझे डिसेबल होता ताले मुझे मेंटल स्टेट रे था टू अंडरस्टैंड देम तो मुझे विषय जानी तो आई हैव टू रीड और आस्क मतलब यही सब प्रोसेस भितर बट से गोटे क्वेश्चन मार्क भी थाए वेदर आई एम गेटिंग राइट और नॉट तो से सब चेष्टा करे ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल मैंने जमी कहते सिंपल राइटिंग इज डिफिकल्ट तो सिंपल वे रे गला मतलब डिफिकल्ट हुए सो दैट माने जमी गोटे लास्ट बेंचर को आप बुझेले फ्रंट बेंचर ऑटोमेटिक बुझी जाए से प्रोसेस रे मु चेष्टा करे दबा को एट द सेम टाइम जमी आप कहले टू तुम से मेसेज टू देम सो दैट आम जहाँ करूँ जदि से मेसेज अक्रॉस न कलु ताले आम ऑब्जेक्टिव किसी मतलब नहीं तो डिफिकल्ट तो डेफिनेटली डिफिकल्ट पर प्रोसेस भितर आई केम टू रियलाइज कारण बिगिनिंग रे जो कली मु तो ये एप्रिसिएसन हेलानी मु आई थॉट आई मे बी रॉन्ग समवेयर हेलो हेलो हाँ तो मत लगे मुझे जगह भूल तो ओवर द टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग कि मुझे अप्रोच करी हाउ टू रिच तो डेफिनेटली आम गोटे पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव मेसेज रे न जीवा तो फिल्म एप्लिकेबल होनी तो मोर आइडिया बेसिकली टू कीप इट वेरी सिंपल एंड एज वेल एज नो एठी इनफैक्ट मु तले सबतक फिल्म देखिली मु तीनटा डिफरेंट डायरेक्टर को तीनटा डिफरेंट कांसेप्ट पाइली फर्स्ट अंबुज को आरंभ करी आई यू नो इट्स लाइक अ पोएट्री गोटे कविता एवं सिंबलिज्म पोएट्री और सिंबलिज्म रो गोटे भिन्न ढांचा मु पाइली जोटा में माइंड द गैप रे देखि परिबा संतोष को पाक आसला बेल को गोटे स्केच पाइली उर्वशी कथा मुझे कहूँ उर्वशी रे गोटे झीर जन स्ट्रगल से ओवरकम करके तार सक्सेस स्टोरी एंड फॉर अबाउट यू वो देखली बाइसाइकिल लेट्स टुगेदर बाइसाइकिल समथिंग लाइक दैट cycling together or something like that. What's the name? This particular, it's a silent no. I'm talking about the silent noise. No. I'm not talking about silent noise. That bicycle something. Let's bicycle together. Let's bicycle together. So I got three different angle to make a movie. संतोष को प्रश्न होची संतोष कर अधिकांश फिल्म फिक्शन मु देखिली बाम्बुजकर एवं श्रेयाशेषकर नॉन फिक्शन मात्रा अधिक किंतु संतोष कर अधिकांश फिल्म फिक्शन अधिक जिते फिक्शन कथा आसूची एवं जिते कैरेक्टर डिजेबल कैरेक्टर को लेकिन से परफॉर्म करार कथा उठुची केते डिफिकल्ट होइतला केते सहज होइतला बा केते कठिन होइतला से मार्गटी समस्त को नमस्कार जे बहुत सौभाग्य जे आमे जड़े आम ओडिशा पाई जे गर्व तांको सहित मु मंचरे अच्छी आमर सूर्य बाबू तांको पे आगे गोटे बड़ करताली हो यही निकट से पाइचंती नेशनल अवार्ड एटा मोर सौभाग्य आमे बहुत निकटतर आमे बहुत निकटरू आमे परस्पर को जानी तेबे जो प्रश्नटी पचारे जे देखिए बहुत जो फिल्म है तार जो टाइटल अच्छी से टाइटल ही व्याख्या करे से डिजेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी डिजेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी मुझे जो उर्वशी कथा कहि मुझे व्हेन आई वाज वर्किंग इन आजिर ओडिशा जो ओडिया कहि जो मुझे आजिर ओडिशा काम करी से आई वाज द रिपोर्टर रिपोर्टर हिसाब से काम करी गोटे छोट झीर स्टोरी देखिए भारी प्रभावित होती से ही दिन मो बीरेन सार को बीरेन दास जी थे आजिर ओडिशार जे मुख्य तांको मुझे जाई कहली मत भारी एटा भारी मो हृदय को छुईला एवं मु आर स्क्रिप्टा लिखी से माने मु आई वाज ए न्यू कमर नुआ नुआ जॉइन करूली बहुत विज्ञ लोक थे मु जूनियर हिसाब से काम करी मु बर्तमान तो आई एम अबाउट माने मु 50 वर्ष पाखापाखि छुईली छुईवा जाऊँगी से बहुत माने जस्ट पीजी करके जाए मोर कहर उद्देश्य हूँ जितेबले आपण को गोटे कॉन्सेप्ट आप जहाँ भी करूँ बीट ए शॉर्ट फिल्म और ए फीचर फिल्म सब स्टार्ट्स विथ एन आइडिया गोटे आइडिया छोटी आइडिया ही गोटे आम फिल्मटे करूँ तेणु जो उर्वशी को मुझे देखिली मत प्रथम तार कामटा छुईला एवं कहते जी बेसी भल ऑब्जर्व करे से भल फिल्म करने चेष्टा करे मुझे ऑब्जर्व कली देखिली वीडियो को बहुत थर देखिली से दिन मुझे स्थिर करी जे आपको नहीं ये परवर्ती समय कौन कौन कर कारण से भी सी बहुत कम एज रहा से गोटे मन को आसला सी आम कहे प्रयोजक निर्माता रही मोर मन पड़ुचे अंत सर जो चमत्कार आर्टिकल लिखी जो बॉलीवुड रे डिसेबिलिटी फिल्म एंड आई हैव गॉन थ्रू सच अ वंडरफुल आर्टिकल आई हैव येट टू गेट थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट फॉर दैट तबे आम यही कंटेक्स्ट को लेकिन आम सेकेंड राउंड को जीवा पूर्व
आम चलचित्र निर्माता माने आम चलचित्र निर्देशक माने केते डिफरेंट इस मेन स्ट्रीम सिनेमार जो पिटी एंगर फन कैरिकेचर को लेकिन जिते करा है डिसेबिलिटी को लेकिन एमाने केते डिफरेंट से लोक देखिबा विल गो फॉर द सेकंड एवरी प्रेजेंटेशन. दादा देखिकी हाँ मैं ठीक है.
ए बेलूनटा केते पैसा गोटा को 10 टंका से ब्लू बेलूनटा दबो एटा तो रेड एटा तो येलो मु ब्लू मागु जे पेरा तुम कोन दिसुनी ना मते देखा जाउनी और आखी खराब हो जाई छी ब्लू मागुचे पेरा तुम कोन दिसुनी ए कोन भाबुचो किछ ना और आखी खराब हो जाई तमे काली काई आसिलनी मु तो तुमको केते खोजली काली मोर टिके देहडा खराब हे गला काली तमे आसिले मु तुमको पढेबी हम केते खेलिबा एस्टे ना इले बेलून किछि बिक्री हलानी से दिन बापा घर को आसिला परे को हला ना खाइबा को किछि नाही कारण किछि काले बिक्री हलानी बेलून सेति पई के केमती बिक्री हलानी तो सांग माने संगे खेड़ियार व्यस्त रहू तो खाइबा कोडी मिलियो पैसा अभावरू आमे डॉक्टर को देखे पारलुनी पैसा अभावरू आमे डॉक्टर को देखे पारलुनी धीरे धीरे आखिरा खराब हो गला सर्जरी कले सक्सेसफुल हबार बहुत चांसेस अछि ए ईयर बर्थडेटा सेलिब्रेट ना करिकी आमे से जो बेलून बिका संग ता आखीटा ठीक करबा से पैसा रे ओके डन मामा एथिर मो पैसा कलेक्ट करची मो बर्थडे पैसा आ मो फ्रेंड माने जो पैसा देछंती एथिर अछि एटा मैंने कि डॉक्टर अंकल को दबा तापे से झियर आखीटा ठीक कर देबे Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Thank you. As I told you before that, yes, please. मत से लागू जब साइड है गले बेटर होता. Yes, yes.
हाँ हाँ या पर आम करें जहाँ मुझे कहती हम जे इंडियन फिल्म बेसिकली डिसेबिलिटी हैज बीन पोर्ट्रेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी एज ऑब्जेक्ट ऑफ फन एज ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिकेचर एज ऑब्जेक्ट ऑफ यू नो पनिशमेंट टू व्हाई एटा करबा द्वारा फिल्म कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ी जाए कि बा जो संवेदना कि समवेदना कथा भिन्नक्षम को नहीं करा जाए कहीं करा जाए सेटा एवं ताकू न करिकी आपण मैंने तीन जन जाक केते भिन्न ताकू केते मात्रा जेहेतु सेमानकर भी जो मैंने भिन्नक्षम से भी साधारण से अन्य असक्षम एवं किंतु तांकर अक्षमता को लेकिन आई एम सॉरी मुई वर्ड यूज करुच्ची तांकर अक्षमता को लेकिन कैरिकेचर करवा पिटी करवा फन करवा एवं ताकू इनग्रेडिएंट भाव यूज करवा इंडियन सिनेमा रे केते दूर यथार्थ एवं आपण तीन जन जाक ये जो संवेदनशील प्रसंगटी कहले ताकू केते मात्रा रे एवॉइड करिसंती लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्नेहासिस हेलो हेलो नहीं निश्चित रूप आप जमी कहले आम कम्प्लीटली अवॉइड करने चेष्टा करूँ कारण बाय नेचर जो मत पचे इंडिविजुअली मुझे नेगेटिवली जापरि माने गोटे अपब्रिंगिंग थाए तो से जमती मु लास्ट ये कहती जे माने जो एसोसिएट है प्रोसेस भितर आई केम टू नो अबाउट देम जमी आपड़ भी कहले से माने अलग गोटे जमी मो फिल्म रे अच्छी गोटे ही मे बी ए ब्लाइंड बट ही इज ए मस्कुलाइन तो अलग जमी म्यूजिशियंस अच्छा ब्लाइंड्स अच्छा दे आर गुड म्यूजिशियन अलग सेक्टर दे आर गुड तेणु मत लगे आम से आस्पेक्ट गुड़ा को प्रोजेक्ट करवा रादर तांकर जो इनएबिलिटी सेक्टर को प्रोजेक्ट करवा तो कैरिकेचर करवा माने इन जनरल सेंस मत कहीं भल लगे क्या गोटे कैरिकेचर करके जो हसुचे मत लगे दैट इज कॉमेडी तो मु एक्चुअली से हिसाब से जिनटा को नहीं से हिसाब से करने सब चेष्टा कर नहीं सीटा एक्चुअली मुझे गोटे एग्जांपल देवी मुझे दिल्ली रे थी आरकेपुरम मोर फर्स्ट डिसेबिलिटी पर फिल्म करी तो मुझे माने प्रकृत ब्लाइंड पिला को तादरे कास्ट करी बोली से ब्लाइंड स्कूल थी आरकेपुरम रे मु गली तो मुझे छोट लेसन माने अनकनसीयसली गोटे गोटे लेसन मिले तो मुझे इवनिंग रे जाइली हॉस्टेल तो मत चारिटा अंधार थिला ता अभिषेक मुझे अभिषेक अंधेरा क्यों है कहला भाई क्या भाई साहब मजा कर रहे हैं अंधे को क्या लाइट चाहिए तो मो मुंडरे से नाला बुझे मत लगे मत तो मत लगे मुझे एक्चुअली इनएबिलिटी तो दे आर केपेबल एनफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ हाँ मोर गोटे सिमिलर से टाइप अच्छे एथि नहीं बट सेम टाइप ही इज अ ब्लाइंड हाँ 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 तो माने मु कहली जो छोट छोट जिन आप ओवरलुक करूँ माने मु भाई मुझे गोटे फ्लो रे कहली बट आई रियलाइज कले सी तो ठीक कथा कहूँ तो सेठू एक्चुअली आई हैव लर्न तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम मेकिंग फिल्म्स फॉर डिसेबल्ड पीपल कीपिंग द स्ट्रेंथ एरिया इन माइंड तो से चेष्टा आम जो कथा कहूँ गोटे सब्जेक्ट उपर फिल्म करवा मो से फास्ट पैरामीटर ऑफ थिंकिंग मोर लुकिंग एंगल टाको फास्ट मु सेट करे जे मु को सब्जेक्ट को देखुची सेठी कौन हो सब्जेक्टिविटी एंगल रे मो जिनसटा को किंतु करे नहीं जदियो सब्जेक्ट इज माय फोकस मु गोटे ऑब्जेक्टिव एंगल टा निये कारण सब्जेक्ट एंगल टा गोटे पर्सनल व्यू पॉइंट रे हे जिवो ऑब्जेक्टिव कौन जे देखंतु आमे प्राइमोडियल टाइम्स माने गोटे केव लाइफ रू आजी गोटे लाइफ को आसलेनी जोठी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबू कथार गाइड करुच्ची सबुठी गोटे मेजरमेंट देउची आमको गोटे सबु प्रकार सिचुएशन रो फोर वार्निंग दे दउची इत्ते टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है गला सफिस्टिकेशन को जाउचे किंतु आमे कल्चरली साउंड हबा को जाउचे कि आमर पर्पस कौन फिल्म रो पर्पस है गोटे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एठी जदि सब्जेक्टिव आम कम्युनिकेशन करवा ताल भूल हो गोटे ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन कले जो मिसिंग लिंक गुड़िक केप मैन रु आज एआई गाइडेड लिविंग स्टाइल पर्यंत जो गुड़ाक सोशल नॉर्म्स जो फोकवेज जो वैल्यू सिस्टम ता थिला आमर सेटा जो अपन कहते गोटे संवेदन
ତା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ସିମ୍ପାଥି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପାଥି କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ବି ସିମ୍ପାଥି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯଦି ମୋତେ ସିମ୍ପାଥି କିଏ କରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଡିଗ୍ନିଟିର କଥା ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ କ୍ୟାପେବଲ୍ ମୋ ଯେମିତି ପାଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସଟା ଯଦି ଆମର ସମାନ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଡିଜେବଲ୍ କହିବା ନାହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛୁ ଆମେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିଲି ସ୍ନେହ ମାମୁଁ ଠାରୁ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସବଟାଇଟଲିଂ ପାଇଁ ଡେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡମ୍ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଡେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡମ୍ କୁହାହେବ ନାହିଁ ଆଇ କାଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ So I can't speak अर्थ is a relative term because I can't hear. So I am not able to speak. But sometimes ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କହିପାରିବାର ଜୀଭ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବି ଯେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ ସେ କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ability to speak is not always the only gateway of our communication. We need a heart again ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ डिजेबिलिटी सब्जेक्टा को बड़ डिफरेंटली नहीं जोटा को क्या पसंद है ना कहीं पसंद है ना कहीं ना एटा ह्यूमिलेशन डेरोगेटरी एटा आम जानी आम ए केते प्रकार कन्वेंशन हो गलानी वर्ल्ड लेवल रे आम राइट बेस्ड अप्रोच करूचु आमको गोटे क्वालिटी लिविंग एवं से जो राइट्स बेस्ड अप्रोच भितर सब्जेक्ट कला बेले आमको अति संतर्पण रे देखा पड़ो जे कहार सेंटिमेंट कहार डिग्निटी को आम हट करूनु गोटे कथा जहाँ ध्वनि फेस्टिवल किंबा आईनार मेसेज लाइन अच्छी जे डाइवर्सिटी आउ गोटे इनक्लूसिव सोसाइटी आड़ को आम लीड करवा सेटा को लेकिन आम आज जाए जहाँ फिल्म भी आम एबे देखिले कि जहाँ दि चार्टा अच्छी देखा सबगुड़िक से प्रिंसिपल मुझे या करने चेष्टा कर थैंक यू संतोष को देखकर प्रश्न टिके डिफरेंट एथि डिफरेंट जो सिनेमा रे जो भाव रे डिसेबिलिटी को डिफाइन करा है इट्स केम फ्रॉम ट्रेडिशनल गेज जेहेतु भारतीय परंपरा रे एमती गोटे धारणा रही आसी एवं सेठू आसी सिनेमा वाले तो निजे मनमुखी भाव में फन की कैरिकेचर कि पनिशमेंट कर देना जहाँ समाज रे प्रचलित होइछि आ निश्चित भाव से धाराटी निश्चित भूल बोली मु कहबी से भूल धारा को सिनेमा रे भर्ती कर दिया है संतोष अधिकांश भाव में फिक्शनल मूवी कर फिक्शनल फिल्म ही करते डॉक्यूमेंटेशन को छाड़ी गोटे फीचर फिल्म करा हुए जो अभिनय भित्तिक सिनेमाटे करा हुए से समाज रे जो धारा गुड़िक अच्छी ये जो धारा गुड़ा जो रंग नॉर्म्स गुड़ा अच्छी ट्रेडिशनल गेज गुड़ा अच्छी ताकू इनकॉर्पोरेट करने बेले बेले निर्देशक बाध्य हुए आ बेले बेले चमत्कार भाव एलिमिनेट भी कर दिए से एलिमिनेशनटा केमती आसी सिनेमा इन योर फिल्म जो गोटे कथा होची आमे जतबेले माने आलुओ नथिला बा किसी समय पर प्रथम सेशन जतबेले इलेक्ट्रिसिटी नथिला आमे अंधारे थिले अंधार थिले ही आमे जानि परिबे आलोकर महत्व आमे जदि सब्जेक्ट चाहूची जे से जिनसटा को आमे जदि दर्शक को न आणुचे से जानि परिबे अंधारटा कोन अंधारटा जानिले ही आलोकर महत्वटा से बुझिबे जदि सब्जेक्ट डिमांड करूची जे गोटे जिनसटा को धरतु नेगेटिवली पोर्ट्रे करिचे कि आमे ताकू माने सब्जेक्टा को आमे जस्टिफाई करने चेष्टा करुचे धरतु जमती अंबुजाबू कहले इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी आमे कहूने आउट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपैथी दैट माने से जो दिन गलानी तेणु आमे जदि जो जेकोसी फिल्म करुचे से फिल्म विषय वस्तु एवं तार शैली प्रेजेंटेशन कौन रहिबो ताकू जदि कि भित्ति करी जदि सब्जेक्ट डिमांड अच्छी ताहले मध्य आमे किसी समय रे मध्य सो कॉल्ड नेगेटिव पर्सपेक्टिव थिबा किसी कथा वस्तु मध्य आमे आनी थाउ तबे जदि आमे देखिबा आमे जो फिल्म करूचे धरंतु विजन ने मु देखिया पे चाहिछि जे आमे सब बेले आमे गोटे धरंतु एई लोकटी आशा बाड़ी धरी चालुची आमे मन रे गोटा आंकी दउचे जे ये किसी करिपारिबो नाही कि तार कोनोसी थे से सक्षम नुह तेणु आम अक्षम जोटा कहले कह खराब लगुच कि बट दिस वर्ड्स हैव बीन यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली तेणु आम सेटा को पोर्ट्रे करने जेकोसी फिल्म हो
ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ବି କଥା ହେବା ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ମାନେ କରୁ ଏଇ ଡିଜେବଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିନେମା କରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା କି ରଖିବାନି ସମ୍ବେଦନା ରଖିବା ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ରଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ତ କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା କହିଲି ଏଇ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫିଲ୍ମ ତିନିଟି ଦେଖିବା ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ମେଲେଇ ଯିବା ନାହିଁ। Lying on bed, I think my son, the sustenance of my existence. Bright colors of hope splashed into my mind. The mind beautiful enkindled my heart with the milk of human kindness. Day in busy, putting smiles on many a loathed face. Day out, busy with own son. Happiness spreads from heart to see beauty, not in face but in heart. A caring हेलो प्रकृतिर समय स्वल्पता दृष्टि किसी काटछाण कराई से संपूर्ण जोटा जो चलचित्र अवधि 5 मिनिट सेठू केवल तार मेजर क्लाइमैक्स को लेकिन बिफोर क्लाइमैक्स को लेकिन किसी आम काटछाण कर सबतक सिनेमा ये देखा संभव नुह और प्रश्न को लेकिन आम से छोट करूँ सो प्लीज क्षमा करेंगे तीन जन जाक निर्देशक कहीं छोटकोट कर समय स्वल्पता दृष्टि लेट्स गो। The first one is the circle and second one is life with dignity and third one is I am sorry. या को क्वेश्चन सर जब रिलेट करा होची सिट पे असहाय लोकटा भिकम हां सेठ जीवा असहाय लोकटा भिक मागुच टंके 2 टଙ୍କା देथिले कोन खेती जाता आजिकल जुग तो सेया मते किंतु भल लागिले ना भाईना कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी दिल्ली गोटे then I am sorry. No? भल्लांग कान को शुभुनी जे टीवीटा को सेतोळे बजर 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 करूछ कोड मोर से कोड करिवो एपटे आंक काम कर सेपटे घर काम कर मोर पागल होछबे घर नियो खाओ
Sorry. So that you can pick the mic here. Wait, I'm comfortable here. Disability is often framed as an individual problem that is defined by medical condition, but really disability describe a group of political marginalized people. जो ट्रेडिशनल गेज कथा मैं कहूली से ट्रेडिशनल गेज को आउ ए जो गेज टी ट्रेडिशनल गेज टी पर अराउंड डिकेट्स आम भीतर रही आरंभ एपर्यंत प्रभावित आजे एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैशन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ फन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिकेचर या भांगा हेले आपन तीन जन या भांगा के चेष्टा कर सिनेमा जिते भांगा को चेष्टा करते ए ट्रेडिशनल गेज आपणकर विवेक भितर केते युद्ध लगे आम टेक्निकल कथा हो ना प्रजुक्ति विद्या सिनेमा प्रजुक्ति विद्यार कथा हो ना आम कंटेंट ही कथा हो बिकज प्रजुक्ति विद्या बा टेक्नोलोजी अन्य फिल्म जहाँ ये फिल्म सीया किंतु एठी जो कंटेंट कथा हो कंटेंट कथा है बेलू ट्रेडिशनल गेज को भांगिला बेलू आम निज विवेक भितर एवं पारंपरिक प्रथा भितर केते युद्ध चली केमती आप अतिक्रम कर भांगिबा कथा तो कहि परिबनी पुणे ठीक है हाँ ये माने एक्चुअली इट्स वेरी माने कौन कहले डिफिकल्ट इन द सेंस वेरी ट्रिकी माने केमती माइंडसेट रे माने भांगिबा कथा तो मु कहबिनी बेसिकली हम चेष्टा करिबा कथा कहबो माने चेष्टा करिबा बट थॉट प्रोसेस को माने आमे भांगी देले जे कम्युनिकेट हे जीवो केते शीघ्र कम्युनिकेट हो हम जानिनु बट चेष्टा करिबा गोटे ऑनेस्ट अप्रोच करिबा जदि गोटे लोक भी चेंज होउची मते लागुची दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट तो से हिसाब से भावुची बट एत डीपली मुझे भाविनी जे आम जदि यहाँ को ब्रेक करवा किसी प्रोब्लेम्स हम हम बट मोर चेष्टा अच्छी जे छोट छोट जिन चेष्टा करवा जदि इट्स क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट कौटी भांगी आ केमी भांगी मन कर निजे कौटी भांगी कौ सिनेमा भांगी आमती भांगी आप निजे फिल कर ऑलमोस्ट सबू सिनेमा माने माइंडसेट कथा मु कहूँ धरतु ये पर्टिकुलर सिनेमा ने से पर्टिकुलर लोकर माइंडसेटा कौन से मुझे निजे जानी इट्स आई क्रिएटेड विथ ए फिक्शनल माइंडसेट मु भावुची जिनसा ठीक हम तो मो हिसाब से केते दूर से एप्लिकेबल से फिल्म पर जो इम्पैक्ट कर लगुच हाँ किसी मात्रा 5% 10% एप्लिकेबल नेक्स्ट फिल्म में मुझे केमती कौन करी तेणु मुझे सब माइंडसेट लेवल माने भाविया चेष्टा करेंगे तो केते इजिली मुझे कम्युनिकेट करी तो मोपाई से सब चैलेंजिंग थाए अंबुज आपण केमती भांगी आपण केते दूर संतुष्ट केते दूर हैप्पी केते दूर सैटिस्फाइड से ब्रेकिंग रे फिल्म मेकर हिसाब से पचारे से जो हैप्पीनेसटा कौटी थाए हैप्पीनेसटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थाए तापर देखी सारापर से फिल्म टकर ये एमती करी सेमती करी से एंगलटा छाड़ू बर्तमान कथा हूँ गोटे आम स्टोरी टेलर आम कहानीटा कहवा से फिक्शनलाइज करके कहवा ना एक्चुअल कैरेक्टर्स नहीं कि कहवा से प्रत्येक फिल्म मेकर ऊपर डिपेंड करे किंतु मु जो फिल्म गुड़िक करी हे तो लास्ट फिल्मटा बोधे फिक्शन फिक्शन दैट इज नॉट ए फिक्शनलाइज थिंग किंतु चेष्टा करा जाइछि हाउ बेस्ट मु निजे इंटरनालाइज करने सब्जेक्टा को सो सी जो अंगे निभाइबा कथा आउ गोटे कथा कहुए समभावापन्न लोकटे बुझीपार तुमर निजर दुख तुमर गोटे सुपरफिशियल लुक देकर सब्जेक्टा को ग्लसी विजुअल करी थोईदेले जे लोक पर्पस ऑफ सिनेमा सॉल्व हम से कथा मु कहीं भावुनी मु भावुची जे इश्यूर जो इंटेंसिटी जो कंटेंट रो जो पर्पस अच्छी एवं से जो सब्जेक्ट तार जो मैंने सब्जेक्ट भी ताकू केते कष्ट लगुच तार कौन सब असुविधा अच्छी जमती आपण कबाट झरका सब बंद करदे भितर रे रुंधी है जमी लगे मनर झरका को खोलिले
ଯାଇକି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଆସିବ ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବଜେକ୍ଟକୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍ଟା ବା ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବି ରଖିବା ଜରୁରୀ କି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋର ସେଇଟା ତ ପର୍ପସ୍ ତ ସିନେମା ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କରିବା ପର୍ପସ୍ଟା ହେଲା ସେ ବ୍ରେକିଂ ଦ ବ୍ୟାରିୟର ଗିଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ୍ ସେ ବ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ଟି ରହି ଆସିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚରଟି ରହି ଆସିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାକୁ ବି ରଖିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଟ୍ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ମୁଁ ଯେଉଁ 5-6ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ କରିଛି ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକିରି ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ୟେସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେ ସୁଡ୍ ଭଏସ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କନସର୍ନ ନା ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଥା କହୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସେଇଟା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଗେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ ନେଇନି କେବେ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାର୍ଟ ପରେ ଯିବା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିକେଚର ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିନେମାରେ ଥୋଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନା ବଟ୍ ସେଇ ଫନ୍କୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ନହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ଧାରଟା ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆଲୋକର ଫିଲ୍ଡଟା କେମିତି ଦେବି ମୁଁ ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାହାକୁ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ନ ହେଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେନି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଥୋଇବେ ସେଇଟା କରିପାରିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ନଏଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣ ଏଗେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଟୁ ଦ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାପ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ମୁନ୍ନା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ସେଇଥିରେ ସେମିତି ସେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା କଥା ଯେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରେଡିସନଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏବଂ ସେଠି ରଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣାଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇକି ଆମେ କେତେ କରିପାରିବା ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଆର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନଟା ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେଇପାରିବ ଭେରିୟସ୍ ୱେରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଯେଉଁଟା ଅମ୍ବୁଜାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ନେବି ଯାହା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା କି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଟିରେ ସେ ଆମ୍ବଟି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ନ ହେଇକି ସେଇଟା ଯଦି ପଣସ ଭଳିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକ କହିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇଛି ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆମକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ କି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ କହିଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କଳ୍ପନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭାବନା ବି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କେତେ ସିନେମା କରିଛୁ ତା ଉପରେ ଆମେ କେତେ ନିରୀକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେଜ୍ ସୋସାଇଟିର ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପୋର୍ଟ୍ରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ନେଇ କେତେ ସିନେମା କରିଛୁ ସେସବୁରୁ କିଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା
Jyoti. ऐसे पिंकी तू बहुत funny बाबा. Have you really put down capable, really suitable partner for us? शारीरिक अक्षमता को पछरे पकई आगे चली उर्वशी लक्ष्य आत्मसम्मान सह बंचिबा आउ किछि नुआ करी देखैबा। आज आ मु काहा पर बोझ होई नाही मो निज गड़े मु निजे ठिया होई पारिछि। सागरे बही जा जीवन पात्र मो भरी केते मोते न देल किछि बोली कहिबी की है भाई तुम आखिक तो देखा जाऊनी माछ कौन धरुच मते सिना दुसुनी माछ कौन दुसुनी
insightful questions that you asked to our filmmakers, and we have such great insights, which I guess some of the students here who are young and upcoming filmmakers, hopefully, they have taken so much knowledge from this. And last but not the least, I'd like to thank Ambuj sir, Santosh sir, and Snehashish bhai for being those filmmakers who've been associated with Dhwani from the very first edition and have brought us so many films that we are showcasing this year. And truly, this session would not have been possible without you three, because you've given us those films based on which sir could make these questions and this session. So thank you very much. And I'd like to request... This is the effect, actually. Yes. This is the effect of thank you. But the cause is Aaina, which created the ecosystem. Sir has told, so you're definitely part of that ecosystem and taking this journey forward. No, we are a part of the ecosystem later on. But the platform of ecosystem is designed by Aaina. Thank you for allowing us. So I'd like to request our volunteers to bring out our mementos so Samir sir can felicitate our members on the dais. But nevertheless, how we? Sir. Sneha madam, please join. Sneha madam. Sneha madam, please join. Thank you, everyone. I'd like to request everyone who's not yet had their lunch to move to the section where we have lunch for everyone, and we'll be back at 2:30 for our next session, which will be the screening of the competitive films. So I hope you're excited, and please let's head to have our lunch. Thank you.
with reference to the CBR matrix. Once again, welcome to everybody. Welcome to the Viewers' Choice Jury session. And we are going to screen all the competitive films that we received for Flow Dhwani empowered by G20 for edition 2023. So welcome once again. I hope you've received a paper which is our scorecard and pen where you can give your marks. Does everybody have the scorecard with them? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ କି ମୋତେ ହଁ ରେ କହିବେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ वी आर गोइंग टू डू ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆମର ଯେତେକ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆସିଥିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସେକ୍ସନରେ ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରେଇବୁ ଆମର ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆସିଛି 1 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ସ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେପରଟାକୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେପରଟେ ଥିବ जोठी फर्स्ट रे ए रु एफ जाए किछटा सिनेमा लिखा है सेटा होची 1 मिनिट फिल्म्स पाई तापरे नेक्स्ट सेट देखिए GHIJK जतक रही सेटा होची सिनेमा 5 मिनिट्स कैटेगरी पाई एंड तापरे L रु Q जाए होची 30 मिनिट्स फिल्म कैटेगरीज पाई सो आपण मान को करबा पहुंचे आमे फर्स्ट आपण को 1 मिनिट कैटेगरी रो फिल्म्स देखेबू जो थे कि आपन को ए रु एफ भितर आम देखेबू 6टा फिल्म्स तो से 6टा फिल्म भितर आप गोटे फिल्म बाछिबे तो सेठी जो आम नंबरिंग कर देजु ए टू एफ सेटा जोटा आपनकर पसंद हबो सेठी देखिबे गोटे एठी सर्कल अछि बेस्ट फिल्म्स इन 1 मिनिट कैटेगरी लिखा है हेडिंग तो सेठी आपनकर जो फिल्मटा आपनकर पसंद आसला आपनकर फेवरेट फिल्म तार इनिशियल जोटा एठी लिखा है ए रु एफ भितर सेटा एठी लिखि पारिबे Similarly, same jinsa rahibo for 5 minutes category and 30 minutes category. And then finally, we are going to ask you to choose one movie which is your favorite among jota apana shortlist karchanti.
So, is everybody clear with the rules or should I speak in English to help? Clear achi? Sure? किछि डाउट? Should I repeat myself in English? Na thik achi. We're good to go. Thik achi? For everybody? Great. So amar sethi door पाखे देखिबे आपनकर किछिटा volunteers भी अछंती. So any moment you have any doubts, you can get hold of them. You can reach out to us as well. So our technical team is ready. So we are going to start screening the film. The first film is called A Beacon of Light. It's by Madhav Jha. So technical team, if we can have that film. आजकल लोग अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं बताती हूँ ना, आपके दाएं तरफ एक कॉलेज स्टूडेंट पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहा है। दो लोग एक अपंग की मदद करने के बहाने उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई नो पार्किंग में अपनी बाइक पार्क कर रहा है। पानी पूरी वाला जिस हाथ से खिला रहा है उसी से खुजला रहा है। इंसान को इस लड़की की तरह होना चाहिए जो कि लोगों को हंसने में, दुनिया देखने में मदद करे, ना कि उन लोगों के जैसा जो दूसरों की तकलीफें बढ़ाए। आजकल लोग अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं बताती हूँ ना, आपके दाएं तरफ एक कॉलेज स्टूडेंट पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहा है। दो लोग एक अपंग की मदद करने के बहाने उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई नो पार्किंग में अपनी बाइक पार्क कर रहा है। पानी पूरी वाला जिस हाथ से खिला रहा है उसी से खुजला रहा है। इंसान को इस लड़की की तरह होना चाहिए जो कि लोगों को हंसने में, दुनिया देखने में मदद करे, ना कि उन लोगों के जैसा जो दूसरों की तकलीफें बढ़ाए। You can please. Okay, next, going to the next film. Sorry for the delay. Technical team, I hope you are ready for the next film. So the next film is called Chasma. It's a 1-minute film by Jasmine Ray and Satyabrata Panda from SJ Creatives team. So technical team, we are ready to go. Thank you. अंधटा कि देखा जाऊनी
से माने भिन्नक्षम हेई भी सक्षम आउ आमे सक्षम हेई भी भिन्नक्षम मानकर सुरक्षा दायित्व आमर। Moving forward, the next film is Differently Abled and Social Inclusion by Rashmi Ranjan Panigrahi. Our overall consciousness on how we treat and interact with disability needs to change, beginning in primary schools. We need to celebrate our peers with their differences. If this is taught at a young age, less discrimination and more social inclusion will occur. Having kids with and without disabilities learning side by side helps everybody appreciate the talents and gifts all kids bring with them. Infrastructure for easy access of amenities should be made for the differently abled people as it's a right. As a society, we have the responsibility to promote the inclusion of our differently abled people to the society. Our overall Moving forward to the next film, Ray of Life by Anuj Kumar Pradhan. overall conscious. Just Just a second, we are waiting for the tech team. Moving forward, the next film is The Ability Within by Suraj Patnaik. Moving forward to the last category, last film in 1 minute category, The Artist by Shreyasi Garg. Agnes Vardam was probably right.
when she said, "Hands are the tools of the painter, the artist." And Bob Ross said, all you need to paint is a few tools, a little instruction, and a vision in you. And you are? The artist. So 1 minute कैटेगरी रे हमें सबू फिल्म्स कंप्लीट कर तो अकॉर्डिंगली अपन ए जो 6टा फिल्म देखिले ता भीतर अपन को जोटा बेस्ट लगिला ABCDEF रु गोटे फिल्म अपन से सर्कल रे मार्क करि परिबे सभा ऊपर फर्स्ट सर्कल रे सेटा को मार्क करिवे से लेटर टाको सेठी लिखिवे We are giving you 1 minute time.
और जब मैं घर गई तो माँ ने मुझे बहुत डांटा और मारा भी, क्योंकि टीचर ने उन्हें बता दिया था कि मैं उनके सरल सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई। आ गई तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था, टीचर ने बताया तुम पढ़ाई नहीं करी हो। जो आसान सा सवाल भी दिया गया था तुम उससे भी नहीं कर पाई। तुम हमारा नाम खराब करी हो। मैं रात भर बहुत रोई। दूसरे दिन मेरे माँ पापा और भाई तीनों पिकनिक पर चले गए और मुझे घर पर ही छोड़ दिया। पर दुर्घटनावश एक सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया। ये खबर फैलते ही अनाथालय के कुछ लोग आकर मुझे अपने साथ ले गए। शुरू में मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरे लिए सब बहुत मुश्किल था। अपने परिवार को खोना, नए जगह पर रहना, नए लोगों के बीच होना। पर मेरी केयर टेकर ने मुझे संभाला, मुझे रोने से चुप कराया और समझाया कि अब वही मेरा घर है और वही मेरे परिवार, और अब वही मेरा ख्याल रखेंगे। एक दिन मैं ऐसे ही घूमते हुए एक कमरे में घुस गई, जहाँ ढेर सारे पेंटिंग्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर मेरे मन में भी पेंटिंग्स के लिए रुचि जगी। बेटा, क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है? तुम ये करना चाहती हो? तुम भी ऐसे पेंटिंग कर सकती हो। और फिर मैं भी पेंटिंग करना सीखने लगी। मुझे पेंटिंग इतना पसंद था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सीख रही थी और बहुत अच्छा भी कर रही थी, और अब ये मेरा पैशन बन गया था। एक दिन एक अच्छे अंकल, जो कि हमारे ऑर्फनेज के फंडर थे, वो बच्चों को देखने आया करते थे। उन्होंने मेरा पैशन और डेडिकेशन देखा और मेरी पेंटिंग्स भी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आई, जिसके कारण उन्होंने मुझे एक कला प्रतियोगिता में ले जाने का चाहा। उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। मैं अपने कहानी का उपयोग करके दूसरों को प्रेरित करना चाहती हूँ। वो अपने अंदर की कला को खोज सकते हैं, और चाहे वो कितने ही अलग हो, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो सकते हैं। Moving to the next film, Black Alarm by Kirtiman Singh and Archana Karangi. এই ପାଖରୁ ଆସୁଛି। କୋଉଠିକି? ଆରେ ମନ୍ଦିରକୁ।
ଯାଉ ଟିକେ ନେ ମଉସା 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 ରୁହ ରୁହ ଗାତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଥା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ତମକୁ ତମ ଝିଅ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇ ଠିକ୍ ଅଛି ओए अरे कुआडे जाइथिलु कि ଏଇ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ को कामरे ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା अच्छा शुणिलु देखिलु मु भाबुथली एठी टिके किछि कोन डोनेट करि थांदे ଡୋନେଟ୍ କରିବୁ ଆରେ ଏସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଜାଣିଛୁ फ्रॉड ହଁ नाम ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖିବୁ ର ଦେଖଉଛି ଏ ଦେଖ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇନଥିଲି କି ଏଇ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ବା केबे का कथा ये କାଲି ଖରାବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲି ଓହୋ ପିଲାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ଥିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିବି ହଁ ଏତିକି ଠିକ୍ ହବ କ'ଣ ଏରେ 28,000 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ମୁଁ ତ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲି आठू भल तो आम मौसा गोटे बाड़ी नहीं आसते हाँ आमर से मौसा हाँ Moving to the next film, Saksham by Truptimay Dehuri. अरे वाह तुम्हें तो बहुत टैलेंटेड मते पेंटिंग करने को भारी भल लगे
हेले कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स सत्य जमिति मो शत्रु बुक रे नंबर्स देखिले मो मुंड बुलाए स्कूल जाउची ट्यूशन भी जाउची हेले किछि बुझी पानी सब जमिति मो मुंड पर बाउंस करी जाउची हेले घरे घरे कोने कथा बुझुचंती हो मोरे लेट हेलानी मैं बासची अरे तुम्हें कांदुच कौन पे आज आम आनुअल एग्जाम रिजल्ट बाहरला मु पुणी मैथ रे फेल गली सांग माने मूर्ख गधा और केते कौन कही चिड़ौचंती आ घर को गले बापा पुणी पार्टी करेंगे आउ गोटे नुआ ट्यूशन दे देबे हेले कौन हबो दीटा जगह 6टा ट्यूशन हे जिवो हेले मैथ मु केबे बुझी परिबिनी अरे तुम्हें एते व्यस्त कौन पे होछ एटा अति गोटे नॉर्मल कथा मु भी दीटा डिसेबिलिटी स्टेज दे गति करछि मते भी लोक माने कहउतले मो जीवन ले किछि करि परिबिनी हेले आज मु गोटे राइटर अरे तमे जो कैलकुलेशन आ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कथा कहउछ सेटा प्रकृत रे गोटे डिजीज जहा को डिस्कैलकुलिया कहआ जाय डिजीज डिस्कैलकुलिया किछि डरिबार नै एटा हेउछि गोटे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एही प्रॉब्लम प्रति 3 रु 6% पिला मध्ये देखा जाय मु भी सेथि मध्ये रो गोटे एथिरे पिला माने कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम फेस करथि बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग रे प्रॉब्लम हुए एमिति कि टंका पैसा हिसाब करिबारे आउ एनालॉग वाच रे टाइम चिनिबारे डिफिकल्टीज फेस करियो मध्ये पड़े हां पूरा ठीक कथा भाई मोर भी सब प्रॉब्लम होछि किछि नो जेउ छुआ माने डिस्कैलकुलिया फेस करछंदी सेमानको अधिक केयर दे आउ अधिक समय दे मैथमेटिक्स बुझेबा सह रिगरियस प्रैक्टिस कले तांका मधरे एही प्रॉब्लम टी आस्ते आस्ते ठीक हे परियो आ गोटे बढ़िया कथा कौन जान जो मैंने डिस्कैलकुलिया फेस करती से छुआ मान पाखे बहुत प्रकार सुपर पावर थाए जमीती कि से बहुत क्रिएटिव होता है इमेजिनेटिव स्किल बहुत भल होता है से वर्ड्स प्रति बहुत भल पाइबा थाए जमीती कि मत लेखा लेखी कर बहुत भल लगे आमर दी जन फेमस पर्सनालिटी अच्छा जड़े है बिल गेट्स आउ जड़े आल्बर्ट आइंस्टाइन से दुई जन भी ए लर्निंग डिसऑर्डर डिस्कैलकुलिया अंशिता तुम सत कहो भाई अरे हाँ से तुम एत व्यस्त न हो निज उपर काम कर दुनिया लोकों कथा को न शुणी निज भितर लुचि रही प्रतिभा को लोक सामना को आने को चेष्टा कर देख तुम भी दिने बहुत बड़ पेंटर रूपे परिचित हो निश्चय भाई थैंक यू सो मच मु कौन सेटा मते जणे देथिबारु अच्छा भाई तमे तो कहले तमे दीटा डिसेबिलिटी प्रॉब्लम फेस करूछ गोटे तो कहलो आउ गोटे कौन अरे भाई चलो जीवा डेरी हेलानी ओ मु एथर आसुची पुणी देखा बगीचारे अछि केते सबु फूल कौन एका दुनिया रे एठी काहे केते जे मनीष केमिति कहुछ एका कुह तुमे परा सबुतिरे अछि स्रष्टांक सुंदर छवि सबु छवि एठी भिन्न होई थाए एकथा पारु न भाबी सबुतिरे थाए किछि तो अधिका किछि कम रही थाए कम को दुर्बल कही हतादर करिबा तो ठीक नुह उड़ी पारे नाही माछ आकाश रे होई जाए कि से अक्षम सबु लोक एठी टिके तो अलगा भिन्न भावरे तो सक्षम से भिन्न भावरे तो सक्षम से भिन्न भावरे तो सक्षम Going to the last film in the 5 minutes category, Vision for Inclusion by Ritvik Das and Subrat Pindhani.
मार्किंग टाइम समस्त 1 मिनट टाइम नियंतु एंड जो 5 मिनट्स कैटेगरी रे GHIJK अच्छी जो फिल्म टा आपन को पसंद लगिला से अल्फाबेट टा सेकेंड सर्कल रे से अल्फाबेट टा को लिखिबे। सरी गलानी जदि जस्ट थम्स अप टेन सेकेंड्स रे कंप्लीट कर दियंतु देन आम नेक्स्ट सेशन को जीवा। जस्ट अ रिमाइंडर ये जो 1 मिनट और 5 मिनट कैटेगरी रो फेवरेट फिल्म्स जोटा को आपण मार्क करछंती सेटा टिके मन रे रखिथिबे बिकॉज आम एने हमर 30 मिनट कैटेगरी को मूव करूछु सो टिके लंबा लंबा फिल्म्स देखिबा बट डू कीप इन माइंड ऑफ योर फेवरेट मूवीज दैट यू हैव चोजन सो फार। सो टेक टीम वी आर रेडी नेक्स्ट मूवी पई। अनुपमा प्लीज अनाउंस द नेक्स्ट मूवी। The next movie in the 30 minutes category is Asahayo by Kirtiman Singh and Archana Kadangi. रो भाई रो आमे धरछु। हां 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 भाई हां धरो धरो ओ भाई धरो ओ बेटा ओ आगे नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ପାଖରେ ଥିବା କାଉଣ୍ଟରରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ଏନି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ। କଷ୍ଟ ସହି ବାବୁ ଅଛ, ଦୟାକର ବାବୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯା ବାବୁ। ଓ ପେଟ, ଭାଇ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବସି ଚିତ୍କାର କରୁଛ, ଏ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯାଇପାରୁନ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପର ଉପକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ତମେ ବାବୁ? ଏତେ ସମୟ ଧରି ଡାକିଲା ପରେ ତମେ ଆସୁଛ? ଡାକି ଡାକି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ଏତେ ଠକ, ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇପାରୁନ? ମୁଁ ଠକ ନୁହଁ ଭାଇ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। ଭାଇ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନି ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମେ ହେଉଛି ଏ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଲୋକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କେହି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ତମେ ମୋ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ତମରି କୋଳରେ ମଥା ରଖି ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ବନ୍ଧୁର କଥା କ'ଣ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହୁଏ? ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ବନ୍ଧୁ ତମେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଥିଲ ବୋଧେ। Moving to the next film, Hear Me Not by Devpritam Saika. हेलो,
क्या कर रहे है? सो रहा था। चाय पीने चलेगा? कौन कौन है? मैं और हर्ष। चल आता हूँ 10 मिनट में। तुम लोग का इंग्लिश का मैम कैसा है? अच्छी है, अच्छी पढ़ाती है। तेरी? हम लोग का भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। कौन है कौन? नाम क्या था, साहू कुछ था ऐसे। बहुत जल्दी नहीं आ गया तो? क्या बोलो यार, हंस रहा है बंदा। हाँ वो बोल रहा था ऐसे तो ठीक ही है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है और अटेंडेंस भी नहीं देती है। I was like, क्या? कुछ नहीं, चल चाय पीने चले। चल तो 3 असाइनमेंट मिले थे, एक में डायग्राम बनाना और एक में नहीं बनाना। हाँ लास्ट डेट ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। पहले उस दिन दो स्केल चुरा लिए वर्कशॉप से। सर भी 2 बार बोल रहे थे उसको, भैया 2 चाय दीजिए। बहुत ज़्यादा है। गर्मी लग रही है भाई, सुबह सुबह बहुत जल्दी गर्मी लगी है। कहाँ खो गई? चाय ठंडा हो जाएगा। समीर कहाँ है? आजकल दिखता नहीं है। भाई कहाँ है वो आजकल? आ ही रहा है। ओह अच्छा। और क्लासेस कैसे चल रहे हैं तुम लोगों के? ठीक, बढ़िया सब। लो आ गया तुम लोग का अनमोल रत्न। क्यों, कहाँ थे तुम अपने तब से? हाँ बोलो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है वो, मिक्सम तक तो क्या होता है, और थ्योरी रह जाते तो चेंज नहीं होता। भैया एक पेप्सी पैसा क्या के देता हूँ। पेप्सी भी होगी? हैदराबादी बिरयानी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय। और क्या बोलो यार, वो बार बार पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बोला यार। मैं बोल रहा हूँ पिज़्ज़ा होता है, वो बार बार पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। अब उसके ऐसे यार, वो हमेशा से जा बोलता रहता है। क्या दिमाग बोला है वो, बता ही नहीं है।
ओए सुन, ओए, क्यों बुलाया था? सुन ना, कल जो तू उस लड़की के साथ थी ना। कौन? आयुषी? हाँ हाँ वही, मुझे आज वो मिली थी और मैंने उसे बुलाने की भी कोशिश की थी बट उसने मुझे इग्नोर। सी आई रियली लाइक हर, कुछ करना प्लीज़। देख, तो दिल छोटा मत कर, मैं कोशिश करती हूँ पर कुछ कह नहीं सकती। हाँ यार, करना कुछ प्लीज़। अच्छा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कल तुझे बात करके हाँ बताती हाँ हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। कंपटीशन के बारे में क्या सोचा है? मालूम नहीं है, सोच रहे हैं, देखेंगे क्या करेंगे। अबे समय क्यों नहीं है अभी तक? अरे ये तो रहा आ गया। यार याद है वो लड़की जो उस दिन रेखा के साथ थी? इस काइंड ऑफ क्यूट यार, बट वो बोल नहीं सकती। अबे तेरा किस्मत ही खराब है। नहीं नहीं, तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं। अबे मुझे जल्दी उससे बात कर लेनी चाहिए। और कल लेंगे। रुक रुक। बता रहा हूँ। हेलो, हाँ रेखा, कांड हो गया यार। हाँ मैं जा रहा था लाइब्रेरी की तरफ और मैंने वहाँ पे आयुषी को देखा, वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। अबे यार, यस। सब लगा।
Moving to the next film, Mission Saksham by Gyanaranjan Satwa. हाँ हाँ मु पंगु ए दुनिया रे मोर किछि भी मूल्य नहीं। मु जाने ए दुनिया मते देखि अटहास्य करे। सतरे कोन ए दुनिया रे बंचिबार अधिकार मोर नहीं। प्रभु मु तो दिव्यांग, आपण भी तो दिव्यांग, कारण आपणकर भी हाथ गोड़ नहीं, किंतु आपण तो ए सारा दुनिया को नियंत्रण करुचंती। आपणको सारा दुनिया पूजा भी करुची। आपणको आशीर्वाद हेले मु मो पाई नुआ दुनियाटे तैयारी करि परिबी प्रभु, पारिबी प्रभु। आपणको वाक्य पंगु लंग यते गिरी। क्षेत्रवासी नायक रमामणि नायक औरसर जन्म जगन्नाथ नायक। स्नेहरे बापा डाकती जगा, सेबेठारु से जगा नाम परिचित। से जन्मर 5 वर्ष पर्यंत साधारण पिलांक परी हसी खेली जीवन काटिथिले। हेले विधिर विधान किछि अलगा थिला। मु पिलादिन भलर थिली। 5 वर्ष पर मोर पोलियो अटैक जिते पोलियो अटैक गला माने डॉक्टर तो जानि पारनी घरे कहले जेतु मोर माने भल पिलाटा गोटे भिन्नक्षम होई गला घरे बापा मा से को पोजिशन देबे आपण माने जानि परथिबे। तो हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु तांको परी मते गढ़ी देले, मो शरीर को दिव्यांग रे परिणत करी देले बोली से कहती। सेबेठारु से बापा माँ और समस्तंको पाई बोझ और चिंता पलटि जाइथिले, किंतु हारी जाई नथिले। मनोबल दृढ़ करी शिक्षा रे आगे चलीथिले। एमिति पाठ पढुथिले घरे सप्तम जाय पढिले। सप्तम परे मो भौणीहर गवर्नमेंट हाई स्कूल को गली, सेठे मो हाई स्कूल पाठ पढ़ा स्टार्ट कली। हाई स्कूल माने मु भाबुतले हां मु पाठ पढी केमिति कोन करि पाउंदी, बहुत मो संग साथी माने एमिति मते कोऑपरेट करले जे तुम निजे भी भिन्न के भाग पाइले। मु भी संग साथी बोला अपना भाबी गंभारी डिहिरु उच्च शिक्षा समाप्त करी उच्चतर शिक्षा पाई नयागढ़ कॉलेज रे आरंभ करिथिले शिक्षा, एवं सही समय रे से कंप्यूटर शिक्षा पाई मन बळाइथिले। मु नयागढ़ ऑटोनोमस रे साइंस एडमिशन करी। एमती साइंस एडमिशन किछि दिन क्लास कला परे सेठी गोटे कंप्यूटर सेंटर थिला। से कंप्यूटर सेंटर रे मोर मु किछि कंप्यूटर नॉलेज शिक्षा पाई गली। एमती थरे गली द्वितीय गली मुटे के आउट क्वेश्चन सिलेबस क्वेश्चन पचारे। मु कहली सर एमती गोटे फोल्डर से मते कहले एटा कीबोर्ड, एटा माउस, एटा कंप्यूटर, एटा डिस्प्ले सेमती कहला भितरे मु कहली सर मोर एमती गोटे कंप्यूटर फोल्डर करिवा से फोल्डर रे नाटा रहिबोनी, माने नाटा सेव हो। हम XYZ भी नाटा नेले सेव होइची, बट सेही फोल्डर रे केमती गोटे सेव हो। मु तम गोटे क्वेश्चन करथि जे मोर टीचर जगन्नाथଙ୍କ प्रश्न बाणरे अतिष्ठ होई कंप्यूटर शिक्षक अपमानित करी विरक्ति भाव प्रकाश करथिले, जहा तांको कष्ट देइथिला आउ देखाइथिला आगु जीवार नुआ रास्ता। नयागढ़ कॉलेज रु पाठ शेष करी राजधानी अभिमुखे यात्रा करथिले उच्चतर शिक्षा लाभ पाई और प्रवेशिका परीक्षा रे राज्यर दिव्यांग कोटारे प्रथम स्थान अधिकार करी अध्यक्षଙ୍କ प्रशंसार पात्र होई परिथिले। से तांको पाई ऊपर महला रे हेउथिबा क्लासरूम को तल महला को परिवर्तन करथिले कॉलेज रो अध्यक्ष। एति की सुविधा सीट कॉलेज रे हेते भी नथिले। हम प्रिंसिपल को देखली आ पाडी सर मोर जे टिके पाडी ताको जेई देखा गली सर केमिति पाठ पढी कोन करी से कहले किछ नै, तू तो क्लास करि पारे तो पे हम संगे संगे हम आईटी ब्रांच रे मु एडमिशन कली इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। सेटा संगे संगे एडमिशन आसिला कोडी माने मो क्लास होतला 3rd फ्लोर रे संगे संगे शिफ्ट हे गला तळ। सीट रे पाठ पढ़िबा समय रे अनेक संगठनक संस्पर्श रे आसीथिले से और निज भितर थिबा प्रतिभा को लोकलोचन को आनी परिथिले। से एमती हला परे मु एटो गोटे दिन माराथन हला सब जनरल पिला चली गले माराथन रे पहुंचाई परिबिनी ना
ସେଠି ମନେ ମନେ ଗଲେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି? ମୁଁ ନିଜର ମୁଁ ବି କାଲିବର ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରିକି ସେଇ 5,000 ପିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ହେଇକି କାଲିବର ହେଇକି ଚାଲିବି। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ, ଯାହା ରୂପ ନେଇଥିଲା କିଛି କରିବାର। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଏକ ସଂଗଠନର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ସକ୍ଷମ। काफी टाइम सोशल वर्क काम करूची दिव्यांग पिलांक पाई अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी विमेन मानक पाई चिल्ड्रन्स मानक पाई बट तार सॉफ्ट कॉर्नर सब बळे रहिछि दिव्यांग पिलांक पाई केमति से माने सोसाइटी रे इंक्लूड होई परिबे और निजे लाइवलीहुड कर परिबे। रे पिला बहुत भलो मते भल लागला आ तार हम मानक संगे जो तार आदान प्रदान माने पिला हिसाब रे छोट हले भी तार हृदयटा बड़ तार मनोभाव बहुत प्रशस्त आउ से पिला माननको हेल्प करिया पे बहुत आगे आसे। ନିଜେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। जगन्नाथ सिंगर संपर्क हमारा एक्सीडेंटली दिला आमे यूनिट रे पिला को लेके करथलो एक्चुअली हमको जाने दरकार थिला सेही बलिया लोक जे पिला को सबथिरे सहायता करबो। भल हीरा मो दुनिया रे देखिनी बहुत भल माने ता हार्ट तो एते छोट नुहे ता हार्ट एते बड़ समस्त पय ता पे टिके ना टिके जगह थाए आ सब बळे तार मन विग्रत कि केमिति मु बड़ को हेल्प करिवि स्पेशली दिव्यांग पिलांक पय से सब बळे लागि थाए कि केमिति ताको हेल्प करिवि केमिति ताको आगु को आनिवि आ केमिति संसार रे गोटे माने जो हम सोसाइटी रे ताकर गोटे जगह रही। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ପାଠ ପଢା ସରିଲେ ପରେ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବି। ସବୁ ପିଲା ଯେତେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଲି। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତ ପାଇଗଲି, ଆଜି ଯିବି କାଲି ଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି, ନିଜେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯାହା ଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ନିଜେ ଆସିଥିବା ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ जगन्नाथ कैंपस सिलेक्शन ही मध्य सेटा इंजीनियरिंग ड्रीम टाको से टोटली से करला एथिबे से गला से निजे दिव्यांग ही अन्य दिव्यांग पिला पे बहुत किछि करे चाहिला सेति त निजे जॉब से करला लेकिन से माने से बहुत लोगों पे से निजे चाहन जे बहुत मो पर जो माने लोग अछंदी तो समान को बहुत किछि हेल्प करि से निजे इंजीनियर से चाहिले चाकरी करके कोठी जाय परता किंतु जेहेतु सी भी फिजिकली हैंडिकैप सी चाहते ए पिला को भाई मु केमति किछि कर पाबी। प्रकृतिर नियम रे समस्ते बंधा, किए कहे से दिव्यांग मानंक पई जन्म तो आउ किए कहे से दिव्यांग मानंकर पथ प्रदर्शक। भगवानंक आशीर्वाद अछि बोली तांक सहकर्मी माने कहंती। मु भाबे बोधे भगवान को सेठी पठै छथि से निजे गोटे दिव्यांग हेले अन्य मानकर हृदय बुझीपार और से भविष्य तार चिंता से केमती पिला समाज मुख्य स्रोत सामिल कर सब आगभर এই অর্গানাইজেশনে জগন্নাথ আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্লাস অ্যাকাউন্টস এই সব কাম সে বুঝুছি। হ্যাঁ, সে বড়িয়া পিলা ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। हाँ तार काम में भी बहुत इंटरेस्ट अच्छी से पाई मु चाहनी जे से अलग कोठी जाए से आमादेर संस्थाय जाते पूरा पूरी इंक्लूड माने थाके से काम करे एटाई हमरा सकले चाइ। मु मते जो टीचर छाड़ी दिला कहले तोदर पाठ होबनी सेटा होनी से नयाड मु आज गोटे कंप्यूटर सेंटर खोली छी भी से कंप्यूटर सेंटर भी विदाउट मु भिन्न केला भाई भणी माने मुने कि सेटा विदाउट फ्री ऑफ एनी कॉस्ट रे मु ताको कोचिंग सेंटर दे पारती बट मु निजे न पढेले सुधा मोर जने गाइडेंस अछंती एनी प्रॉब्लम पर मंथली मु जाए गाइडेंस करे मु जने भिन्न कमाले सुधा मु माइंड भिन्न केवल मोदी आ मु संसार जते भिन्न के मत अछंती मु ताको केमिति कोऑपरेट करि का करबी कारण मु तो निजे सक्सेसफुल हेई पारुची बट अन्य केमिति सक्सेसफुल कराइबी मोर शेष उद्देश्य सेटा अछि समस्त जति भिन्न कमाले सुधा से निजु के भिन्न कम भाबिबेनी सेटा मोर शेष लक्ष्य अछि मो लाइफ रे।
आमे महाप्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करुछु जगन्नाथଙ୍କ जीवनरे सबु सफलता मिलु तांको जीवनर चलापथ कुसुमित हेउ से सदा सर्वदा दिव्यांग मानक उन्नति पाई चेष्टित थांतु। जीवा नेक्स्ट फिल्म को मूविंग टू द नेक्स्ट फिल्म स्वीकार बाय प्रतीक्षा दास एंड अविनाश राउत। and me and him and 10 other people, we are born equal. As we grow up, you grow up a certain way, you respond a certain way, whereas I am not able to respond a certain way like you, which is the normal standard that the society has established. If you laugh at a child, if you tickle a child, the child will laugh back. But if you tickle me, I might not like it, I might go away, might not be able to laugh at it. I might get a different sensation. I might get a sensation of pain when you're tickling me. So my feeling on my skin, my ability to see and hear are completely different than yours. So I am behaving in a way that society for the rest of my life will not be able to accept the way I am behaving. And there are many like me. Autism ऊपर बेसी knowledge तो नहीं, बस physical disability. As far as I know, it is a disability. The growth is not that much like compared to other people. How much they are means how much their brain functions. We too have two kids in our home, two daughters, and we haven't seen such kind of behavior in our kids. And to be frank, this is the first time I am hearing this word. Autism is a neurological disorder where the IQ might remain the same. There are not too many changes in the grey matter, but it is in the white matter where the connections are. That is where the story takes place. And a person with autism is unable to communicate, is unable to socialize, is unable to imagine. So these three are skills that normal people move around with in society. A person in the autism spectrum disorder, it is called a spectrum disorder because there are many kinds of autism. You may be mild, you may be moderate, you may be severe, you may be high functioning or low functioning, but you still have autism, which means that you need assistance, and you will need assistance for the rest of your life. With autism, there is no two people who are alike.
in this whole world. There are no two people who are alike having the same disorder. So you see, you have to design a different curriculum, a life curriculum, a different routine, a different pattern, a different set of communication for two different people with autism. You know, there are too many incidences in airlines and all where they have not allowed people with autism just because of their anxious gesture of clapping hands, unacceptable behavior of waving their hands, clapping their hands. So at that time, people in the public sector should have some sensory toys with them, like squeezy balls, like a smell box, just to give them a different sensation so that they can move away from their anxious behavior. We still have parents, they will know that the child is under the spectrum, they will know that the child will have difficulties adjusting in a typical setup. But even then, there is this notion that I want my child to go to a typical school. See, it's not about we not wanting the child to be into an integrated setup, but it's about what is the need of the hour. What does the child need at one point of time? एमानक पय जेतेरु जेते अधिक प्रैक्टिस करा जाई परिबो से माने सेते आगु को जाई परिबे तो एमान पय बेसी दरकार बेसिकली दरकार कि लाइफ स्किल से माने केमति निज काम निजे करि पारंतु बस एतिकी तांको पय दरकार ता सहित होय तो तांको सहित एबे तांको बापा मां अछंती बोली के से तांको एडजस्ट कर दोछन किंतु आगु को तांकर एमिति किछि काम रे से माने एंगेज हुवंतु जहा द्वारा से निजे निज को चलै परिबे स्पेशल एजुकेशन रे पिला मानकर फाइन मोटर डेवलपमेंट हुए ता सहित पिला मानकु हमर कटिंग केमति के आगु को लाइफ रे गले कोठी को जिंस कले कोठी को जिंस देखा जाय पर माने को काम रे एंगेज होई परिबे जेमति के किछि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया होचे वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा से माने किछि दी पैसा इनकम करके आगु केमति निजे चल परिबे कारण आगु को तांकर साहा भरोसा पय भी बापा मां को अंते केमति से ये करबे तेणु से वोकेशनल ट्रेनिंग आ गोटे जिनस जेतेरु जेते अधिक प्रैक्टिस करा जाई परिबो सेमानकर डेवलपमेंट सेतिक हबो. There is a girl there called Siddhi who will not seem autistic to you, and she has beautiful dance movements which goes against the theory that people with autism sometimes don't know where their limbs are, their hands and legs. She has beautiful dance movements. She doesn't seem autistic by face, but when you interact with her, you do know she's such a pretty girl. ड्रॉइंग सिद्धि को मु कौन करे सिद्धि मते सबुदिन दब जे होमवर्क दियो होमवर्क रे तार फेवरेट है ड्रॉइंगटा हाँ ड्रॉइंग रे आमर जो जो ओकेजन ये स्कूल रे जो फेस्टिवल होइतिबो कि आमे किछि ग्रुप रे बसी किछि करूथबु मु सिद्धि को सब बेले सेही टॉपिक ऊपर दिए हाँ से भी ड्रॉइंग करिके माने मते बेले आश्चर्य लगे से केते इमेजिन करूची आ केते मने रखुची से केते सुंदर भाबरे. I want to say to the society that we have to change the way we look into things. We always see, like when it is a disability, oh my God, they will be needing this much. We always see from a sympathetic view. Educate everybody to make them more aware that this is what we also have in the society and we have to move along with them. So we should not behave with them like they are outsiders. We must include them, be compassionate. If compassion is something that human beings have to be trained with nowadays, we have to train them. But we need to create a more friendly place for those with autism, for those families who have suffered. If you give them the right kind of support, they can also be a part of the society. Not only a part, they can contribute a lot to the society, and there is so much to learn from them also. Manifest behavior which is socially more acceptable for you, because yours is the world that we are going to walk in, because you are not able to accept us. So for you to accept our awkward behavior, you must help us with certain things like these sensory tools. You know, it's confusing, but we need to equip ourselves to make autism
included in our society, because we're citizens, right? There is no cure to autism. Everyone can be trained, not only the individuals with autism, but also the society can be trained. Moving to the next film, The Dark Path by Durga Prasad Martha. କାନ୍ଦୁଛି ହସୁଛି ଚାଲୁଛି ଝୁଣ୍ଟୁଛି ସିଏ ବା କେମିତି ହେଲା ଭିନ୍ନ ତୁମ ପରି ଛୋଟ କୁନି ମନଟିଏ ଅଛି ସିଏ ବି ଦେଖିଛି କେତେ ସପନ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବ ନିଜ ମା ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ପୂରଣ କରିବ ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ସାରା ଦୁନିଆ ତାକୁ କରିବ ସଲାମ ହଁ ସେ ସକ୍ଷମ ସେ ସକ୍ଷମ ସେ ସକ୍ଷମ। ସତରେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ କାହାଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଦ ଡାର୍କ ପାଥ୍। नमस्कार दर्शक बंधु मु आपणक स्नेहर देवाशीष पाणिग्राही आज एक कहानी कौची से कहानी नायक वर्तमान भी अंधार अच्छी और भविष्य कथा छाड़ू से एक भिन्न मनीष जहाँकि आपण मैंने भावुं स्कूल अलग तापाई सांगसाथी अलग तापाई बही भी अलग कि प्रकृत में से भिन्न नुह कहीं भिन्न नुह आसतु देखा। राजा नायक राजा तमे गणित कर कहीं मिसेल देखी लेख 10 विश्वास न लगे भी सत जे सी भी निज हाथ रे मैथ करि पारुची निजे निजे सी कैलकुलेशन करि पारुची ताहले से केमिति भिन्न हैला नॉर्मल छुआ बरी सी भी गणित साहित्य इतिहास भी पढ़ी पारुची। नमस्कार सर आज को 30 वर्ष है मु यही दिव्यांग मान गहन आसुअछि दिव्यांग मान भितर आमर राजा बोली गोटे छोट पिला अच्छी से पिला निजे निजे निजर समस्त कार्य सुचारू रूपे करिपारुअछि निजे निजे मार्केटिंग करिपारिबो निजे पैसा गणी पारुछि निजे खेल कसरत व्यायाम एवं निजे निजर आसबाब पत्र निजे सजाड़ी रखि पारुछि निजे पाठ पढ़ुछि मिशाण फेड़ाण गुणन ए सब कार्य सुचारू रूपे करि पारुछि ब्रेल अक्षर मध्य सुचारू रूपे लिखि पारुछि। साधारण छुआ मानक भली से भी योगा करुछि से भी प्राणायाम करुछि से भी सांगसाथी सह खेल कूदरे पूरा दिन कटि जाउछि से भी केबे भाबिनी जे से जड़े भिन्नक्षम हाँ आज्ञा सतरे से भिन्नक्षम नुह से भी सब किछि करि परिबो। ठीक आज को 8 वर्ष तले घरे एक खुशीर माहौल भी थिला चारिआडे मिठा बांटिबार समय भी आसी जाइथिला आउ गोटे मार दुख कष्ट भी चली जाइथिला कारण कोना कोटी जना पड़िथिला जे गोटे राजकुमार आसीबो
कुनी कुनी पादरे घरर नीरवता को भांगीदेव अजा आई जेजेमा जेजेबापा समस्ते खुशी थिले किंतु सेमिति किछि हेई नथिला समयर खेल भी बड़ विचित्र थिला डॉक्टर आसी हठात कहिथिले जे तम पुओ ब्लाइंड अछि से डिजाबिलिटी कैटेगोरी रे जाउछि हठात समस्तकर स्वप्न भांगी जाइथिला आ ए कष्टमय भितरे धीरे धीरे समय भी बीती जाइथिला ताकू छड़ा हेतिला एक स्पेशल स्कूल को और जो स्कूल भितरे तार मोर साक्षात हेतिला आ तार मोर पाखापाखि 8 मास मिसिकी रहितिलु आ मु परखितिली तार चाली तार चलनी तार खाइबा तार सोइबा सब किछि को आ तापरे विश्वास करंतु बिल्कुल कोनोसी क्षेत्र रे भी से अलगा नुह कि कम नुह से काहे कि भिन्न मनिष हबो एटा केते टंगा रे बाबा धरलु जदी कहलु एटा केते टंगा 50 टंगा राजा क्वार जो पास चलो मुने ना सामने खाली रे मु आपन को कहि नथिली जे से सक्षम बोली हाँ से स्वाभिमान भी निजे निजे से सब किछि काम करि परिबो आउ निज काम पई से भी आउ कहार साहाय्य लोडिलानी ये परा स्वाभिमान पिला आउ से परा राजा दिन आसीबो दुनिया रे से राज करिबो ताहले डेरी खाइंकी आज आसंतु समस्ते मिसी ए भिन्न मनीष आउ साधारण मनीषर ए जो कांथ को भांगी देबा आउ सेमानंकु समाजर मुख्य स्रोत सह मिसई देबा देखिले तो निज हाथ रे से माने निजे खाई पारुछंती निज हाथ रे निजे निजर प्लेट को भी सफा करि पारुछंती ताहले से माने केमिति भिन्न हेले आम परी से माने भी गोटे तो छोट छुआ सीता परी शक्ति नाही लक्ष्मण हराए भाई जगते मेलिबे नाही हनुमान हरि भक्त कोटि रे गोटिए निज आखि को भी मु विश्वास करि पारुनी से निजे निजे सबु किछि काम करि पारुछि जहा जने साधारण मनीषटीए करि परिबो निजे निजे पैसा जानी पारुछि निजे निजे खाई पारुछि इते बढ़िया सुमधुर गीत भी से गाई पारुछि ता अर्थ निजे निज गोड़े से ठिया हेबा पई सक्षम सेति पई तो ताको जेते बेले मु निजे देखिली सेतेले मो मन भी कहउतला हाँ से सक्षम हाँ से सक्षम जेतेबेले घंटा घंटारे ठीक 4टा बाजी जाए समय जेतेबेले इशारा दिए जे आज दिनर पाठ पढ़ा सरीगला से माने भी बहुत खुशी रे बाहरी पड़ती चारि कांथर मंदिर कांथ को भांगी से प्रकृति रानीर खोला आकाश तले किछि समय खेलिबा पई आउ तांको सह तांकर हेडमास्टर गोटी गोटी छुआ को धरी नहीं जानती किछि समय खेलिबा पई सतरे ए जागर फेरिबा को मन लागु नथिला जीवन रे बहुत चेहरा आसे आ पुणी फेरी जाए किंतु बहुत कम एमिति चेहरा आसे जो चेहरा को कि मनरू केबे भी पासरी हुएनी आ से चेहरा भितरे यही कहानी रो नायक थिला राजा जहाँ को आपण माने भिन्नक्षम कहिचंती जहाँ को आपण माने डिजाबिलिटी कही मुख्य स्रोत समाज रु दूरे देइछंती किंतु हाँ आज्ञा से माने सबु किछि करि पारंती केवल दरकार आपणकर टिके सहयोग आउ साहाय्य आउ टिके भल पाइबा हाँ हेई पारे केउ जन्मर पुण्य फल कि केउ जन्मर पाप फल रे से माने आज समाज रो बहुत दूर को चली जाइछंती तांको पई स्कूल अलगा आपण तो एबे बढ़ांतु
ए कहानी केवल राजार नथिला, ए कहानी थिला एक डिजाबिलिटीर कहानी थिला, ए कहानी थिला एक ब्लाइंडनेस कहानी। भविष्य तो वर्तमान सीना अंधार हो जाइए, किंतु तार भी एक स्वप्न अच्छी उज्जवलमय भविष्यतर। तार भी बहुत एक मन अच्छी निज गोड़े निजे ठिया हबार। आउ हाँ, से भी निश्चय तार जीवन युद्ध जीतब। प्रकृत में कहवाकू गले ये कहानी नथिला, एक संपूर्ण सत्य घटना थिला। और ये घटनारू यही कथा शिखिली जे से माने बिल्कुल भिन्न नुहंती, से मानकु भिन्न आपण माने करिसेंती। ए समाज ही से मानकु एक भिन्न परिचय देछि। आसंतु ना थारे सेही भिन्नतार, सेही अलगार, सेही डिफरेंटर पाचेरी को भांगी दे से मानकु मुख्य स्रोत को आनिबा, एक सहयोग, एक भल पाइबार हाथ बढ़ेबा, आ से मानकु मनीष भली मनीषटीए बंचिबार अधिकार देवा। Moving forward, 30 minutes category last film, Umeed by Subhasmita Jena, an SMRC film. મારું નામ ઝાલા ભાનુબેન છે। હું 2.5 વર્ષની થયા પછી પોલિયો થવાથી હું વિકલાંગ થઈ। હું 1 થી 7 ધોરણ ગામમાં ભણી છું। ત્યારે મારા પપ્પા હરરોજ મને લેવા મૂકવા આવતા હતા। સ્કૂલમાં સંડાસ બાથરૂમ નહોતું, ઘસડાઈને જવા આવવામાં તકલીફ પડતી હતી, કપડાં ભીના થઈ જતા હતા, તો પણ હું જતી હતી સ્કૂલે। અને 8 થી 10 ધોરણ હું હોસ્ટેલમાં રહીને ભણી છું। અને 10મા પછી મેં પીટીસીમાં ફોર્મ ભરેલું। મેરિટ પ્રમાણે એડમિશન મળવું જોઈતું હતું, પણ એ લોકોએ તમે વિદ્યાર્થીને કેવી રીતના ભણાવો, બ્લેકબોર્ડમાં કેવી રીતના લખો, તમારી અપંગતાની ટકાવારી વધારશે, એ બધું કહીને રિજેક્ટ કરીને એડમિશન ના આપ્યું। પીટીસીમાં એડમિશન ન મળવાથી હું ઘણી હતાશ થઈ ગઈ, નિરાશ થઈ ગઈ। પુસ્તકો પ્રત્યે મને નફરત થવા લાગી। સમાજમાં વિકલાંગ મહિલાઓનું કોઈ સ્થાન નથી એવું લાગ્યું। બે ટંક ખાવું અને આખો દિવસ બેસી રહેવું એવી મારી જિંદગી હતી। મને સામાજિક પ્રસંગમાં જવાનું ગમતું નહીં, ત્યાં પણ એકલા એકલા જ લાગતું। ધીરે ધીરે ફેમિલી પર બોજારૂપ લાગતી હોય એવું મને લાગતું અને નહોતા મળતા। હું ખેતરમાં એકલી રહું છું। શરૂમાં જ્યારે ખેતરમાં રહેવાય ત્યારે મને ડર પણ લાગતો હતો। રાત્રે ઘણીવાર ડર લાગતો હોય છે, છતાં પણ હું હિંમતથી રહું છું।
સમાજમાં વિકલાંગ અને એમના સંપર્કથી જીડીઆરસી અને યુએસએડની તાલીમમાં આવી. તાલીમ દરમિયાન મને વિકલાંગોના કાયદાઓ, યોજનાઓ અને અધિકાર વિશે જાણકારી મળી. એ સાથે સાથે મને વિકલાંગ મહિલાઓના અધિકાર વિશે જાણકારી મળી. તાલીમમાં આવ્યા પછી મને આત્મવિશ્વાસ વધ્યો. મને લાગ્યું કે વિકલાંગ મહિલાઓ પણ શિક્ષણ લઈ શકે છે, કામ કરી શકે છે, આગળ આવી શકે છે અને પોતાની જિંદગી જીવી શકે છે. વચ્ચે મારું પેન્શન બંધ થઈ ગયું હતું. જીડીઆરસીની તાલીમથી મને જાણકારી મળી કે હવે બેંકમાં એ પૈસા આવે છે અને ખાતું ખોલાવવું પડશે. તો મેં એ રીતના ખાતું ખોલાવી અને સમાજ સુરક્ષામાં જઈ પેન્શન ફરીથી ચાલુ કરાવ્યું. તાલીમમાં જાણકારી મળ્યા પછી ભારત સરકારની સ્વચ્છતા અભિયાન યોજના હેઠળ મેં મારી ઝૂંપડીની બાજુમાં શૌચાલય પણ બનાવ્યું. મને સિલાઈ કામ આવડતું હતું. એ પછી મને યુએસએડ તરફથી સિલાઈ મશીન મળ્યું. સિલાઈ કામ કરી હું રોજના 100 થી 150 રૂપિયા કમાઉં છું, જે મને ગુજરાન ચલાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. પહેલાં જે જીવન જરૂરી વસ્તુઓ લાવવા મને મુશ્કેલી પડતી હતી તે પહેલાંથી લાવી શકું છું અને મારું જીવન હું સ્વાવલંબી જીવી શકું છું. હવે મારી ફેમિલી પણ મને સપોર્ટ કરે છે. હવે હું સમાજમાં સ્વતંત્ર અને મારી પસંદગીનું જીવન જીવી શકું છું. So audience, are you ready to cast your votes for the 30-minute categories? If it helps, I will like to read out very short descriptions of the films if it helps refreshing your memories. The first film was Asahaya. A person with visual impairment helps another person who was suffering from pain by taking him to the doctor and being a good friend and helping him. The second film was Hear Me Not by Dev Pratim Saikia. A hearing and speech impaired girl, Ayushi is insecure in love, believing that her disability drives everyone away, but that didn't stop Sameer, who is head over heels in love with her and in winning over her heart. As for him, disability is not something that causes an issue in love. Third is Mission Shakhyam. Lord Jagannath is the soul of the world, but Jagannath Nayak is an ordinary person with some disabilities. Lord Jagannath is disabled, but he is controlling the whole world. But what can we do? What can Jagannath Nayak do, because he was paralyzed because of polio? So it was his story that we saw in the cinema. And then we have Sweekar, which portrayed the lives of autism spectrum disorder individuals, those people who never got the voice to express themselves to society, but have a lot on their minds to show the world. The documentary won't make people cry or get sad, but majorly it focuses on how us, the society, can play a big part in normalizing a disability and not making people sad about it, but by bringing more attention to them. The fifth one was The Dark Path, a film that was based on a visually impaired individual who can do everything as a normal person can, and their ability is greater than their disability. They're born to rule the world and only need your love and support and to make them part of our society. Yeah. Yeah. Actually, okay, okay. And the last one was Umeed, which we saw in the end. So I hope everybody has selected their one favorite movie among all three categories now. So can I see a show of hands for those who have completed the entire voting process? The favorite in all the three categories, as well as the final movie which they thought was the best among all the movies showcased.
Okay. Huh? Evening program. Okay. So we are actually having a gala evening today, charity dinner, which starts from 6 p.m. onwards. For the today's evening, we have Sushmita Das with us, Abhishek. We have a storytelling of the scripts that we have received, a dance program by our choreographer Hariyar Das, and a musical night today continues, which starts at 6 p.m. onwards. So requesting all our friends, those who are interested, so please stay back. Once you've casted your hosts, you can reach out to any of our volunteers in the hall and they can help you in collecting your surveys. And those interested, please.